A very good evening to all my dear students. Welcome to today's session. And I hope that whatever we have done so far in chapter number 10, you all have gone through the module till that topic. Okay? And thank you, Siddhant, Meghna, Sudhanshu, Hiral, Bangredi. Thank you so much for wishing me. So quickly send in your replies whether you have any doubts so far. So today we will be starting with and we'll try to finish Caro 2020. Very important from the point of view of your practical understanding as well as your examination point of view. Okay? And if you remember in the last session, I have told you that for understanding Caro 2020, you need to have an understanding of chapter number 9. With respect to the various disclosures requirements as per the amended schedule 3, which you all have done in chapter number 9. So I expect that you all have gone through those disclosure requirements before coming for the session. Okay. Thank you, students. Thank you so much. So thank you, Akesh, Kehani, Rahul, Hitesh, Siddhant, Sonika, Kaveri. Chalo, let us start. In case of any query, please send in your queries. Okay? And Hiral, there were 2 doubts which I did not take up in the last session, so you can send them today at the end of the session. Okay? So in the last session, we started with section 143 related to powers, rights of auditors. And in fact, this section has 11 subsections. Today we'll be summarizing, we will be collecting together whatever we have done in section 143. So a quick revision to the rights of auditors. So basically the name of section 143 is powers and duties of auditors and auditing standards. Okay? So right now we are quickly revising powers and rights of auditors. There are 5 rights, that is right of access to books given in section 143 subsection 1, right to obtain information and explanation from officers, again section 143 subsection 1. Okay. Then we have right to receive notices and to attend general meeting, section 146. And in fact, this is the right as well as the duty of the auditor to attend the general meeting. Okay. Right to report to the members of the company on the accounts examined by him, section 143 subsection 2, and right to lien, which is derived from the general principles of law. Okay. I hope these 5 rights are clear to all of you. Now moving on to the duties of auditor, we have covered point number 1, which is duty of auditor to inquire on certain matters. There are 6 matters and this duty is specified in section 143 subsection 1. And on these 6 matters, there is an announcement by the research committee of ICAI, which says that the auditor is not required to report on these matters, these 6 matters, unless he has any special comments to make on any of the items referred above, A to F. So what are these matters? So auditor is required to inquire. ठीक है, तो इंक्वायरी तो करना ही है. अगर everything is fine, then need not report. But if auditor has to make some special comments, he can mention that in his audit report. So whether loans and advances by the company have been given based on security, so in that case, they should be properly secured, and the terms should not be prejudicial to the interest of the company or its members. What terms? Like repayment schedule, interest rate, etc. Point number B, that whether any of the transactions of the company are presented merely by book entries. So this is talking about what? Adjustment entries where is no flow of money. Okay? And whether these entries are prejudicial to the interest of the company. Point number C, this is not applicable in case of investment company or a banking company. So any company other than these companies, if they have the assets in the form of the shares, debentures or other securities, and those have been sold at a price less than their purchase price. Okay? So in that case, that is to be mentioned. Whether loans and advances made by the company have been shown as deposits, whether personal expenses have been charged to revenue, and if the shares have been allotted for cash,
whether cash has actually been received, and if not, then whether the position that is shown in the accounts and the balance sheet is correct, regular, and not misleading. Okay? And I'm repeating again that the reporting on these matters is not required unless the auditor has some special comments to make on these matters. Very, very important. MCQ, true, false, anything can come. Okay. Duty to report. So this is a replica of section 143 subsection 2, which we have covered in right of the auditor to report to the members. But yes, it has section 143 subsection 3 also, whereby we discuss 10 points where the auditor shall state, matlab कैसा भी positive remark है, negative remark है, auditor shall state. So this is the difference between the 6 points of section 143 subsection 1 जो हमने just अभी revise किया and these 10 points. ठीक है, बहुत logical है. Basically just keep in mind that auditor shareholders को कुछ बता रहा है. Shareholders को maybe financial statement read करके नहीं समझ आएगा. तो auditor क्या बता रहा है? Whether he has sought and obtained all information, है ना, मिल गया है तो भी बताना है. And if not, the details and effect of such information on the financial statement. This was point number A. Okay? B. This pertains to section 128, that whether books of accounts as is required by law. So law में कहाँ बोला गया है? Section 128 of the Companies Act, whether those have been maintained, and with respect to branches, whether properly summarized returns are received by the head office in case of branches not visited by him. With respect to C point, whether the report of the branch auditor had been received by the company auditor and the way in which he has dealt with such report in his report. Okay? Point number D, whether company's balance sheet and profit and loss are in agreement with the books of accounts and return. So whatever books of account, ledgers, trial balance, whatever returns, be it returns from the branches, be it the GST return, whether everything is matching or not. Whether financial statements comply with the accounting standards. F point, देखो यही सब तो शेयर होल्डर्स जानना चाहेंगे ना, है ना, तभी तो ऑडिटर को पॉइंट किया है ना कि ऑडिटर गिव योर ऑडिट रिपोर्ट. सो दीज 10 points are specifically mentioned. अब just think that when the auditor has to give something in writing कि ऐसा हुआ है या नहीं, तो auditor will check that in detail ना, तभी तो वो mention कर सकते हैं ना. ठीक है. So point number F, the observation comments of the auditor on financial transactions or matters that have an adverse effect on the functioning of the company. I gave you example of what? The uncertainty, material uncertainty with respect to any of the outcome of a litigation, which may have an effect of what? Significant outflow by the company, right? So whether any of the director is disqualified from being appointed as director under section 164 subsection 2, any qualification, reservation, adverse remark relating to maintenance of accounts and other matters. Point number I is applicable with respect to those companies where the company need to have what? Internal financial control. Okay? And the reporting of IFC is not applicable to private company, which is what? One-person company, small company, or company having a turnover of less than 50 crores as per the last audited financial statement. And देखो जहां पर भी exemption होता है ना, तो वहां and all conditions are to be satisfied. Generally यही rule होता है. ठीक है. जहां पे applicability होएगा if any of these are satisfied or से connected होते हैं लोग. ठीक है. And the aggregate borrowings from banks, financial institution, body corporate at any point of time during the financial year less than 25 crores. Point number J is such matter as may be prescribed, and very, very important, Rule 11 of Companies Auditor and Auditor Rules 2014 ने कुछ matters prescribe किया. So what is the first matter? Whether the company has disclosed the impact of any pending litigation on its financial position. If provision is to be made as per the law or accounting standard for material foreseeable losses on long-term contracts, including derivative contracts, whether that has been done or not, and whether there is any delay in transferring amount to the IEFP, the Investor Education Protection Fund. Okay? Point number 4, clause 1, 2, 3, you all have done this in detail in your chapter number 9. Okay? So whether management had given a representation that apart from whatever has been disclosed in the notes to account, apart from those, no other funds have been advanced, loans or invested through any intermediary.
ठीक है. And same way, point number 2 is that apart from whatever has been disclosed in the notes to accounts, no other funds have been received by the company. मतलब यहाँ पर the client is what? Intermediary. ठीक है. And funds have been received from, in our example, Y Limited, and A is our client to invest in any other company on behalf of what? Y Limited. ठीक है. And the third point says that based on the audit procedures performed by the auditor. So with respect to first and 2 point, Hana, so whether anything has come to the notice of the auditor, which to believe that representations made under clause first and second are what? They contain any material misstatement. And then whether the dividend declared and paid by the company is as per section 123 of the Companies Act. So I hope everything is clear. And thank you so much, students. Neha, Thakur, Simran, Krishnan, Shakti Velan, ठीक है, नीलाब्जो, जेनिशा, खुशिया, खुशी, केहानी, राहुल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. ठीक है. सो आई होप जितना भी हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू पावर्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. ठीक है. तो चलो, नाउ what we are discussing the duties of auditor. ठीक है. So we have seen 2 points. Then in fact I think in the last session we have covered this also, duty to sign the audit report, that as per section 145 auditor is required to sign. Unsigned audit report थोड़ी ना दे दोगे shareholders को, sign तो करोगे ना. But how? In terms of section 141 subsection 2, that only a CA partner is authorized to act and sign on behalf of the audit firm. And this F clause which we have discussed in 143 subsection 3, it says that such clause, because देखो this is having a negative adverse effect on the functioning of the company now, so such point needs to be read out in the general meeting, right, before the company in the general meeting. Clear? ठीक है. Now what is this point? So this is with respect to Caro. See this in case of government company na, so you will be doing this topic in detail in chapter number 13. So abhi I am not taking up the test audit or supplement audit or directions by CAG with respect to government companies, because there is a separate chapter number 13 on this. ठीक है. Then if you remember, what is the name of section 143? So देखो, section 143, powers, duties of auditor and auditing standards. ठीक है. Powers and duties of auditors and auditing standards. So now whatever subsections of section 143 we will be doing now, they are about what? Auditing standards. ठीक है. So अभी तक ना we have done so many auditing standards, and we always say that auditor को ये comply करने हैं whenever he is conducting the audit, है ना. Starting for SA 200 और अभी तक आपने SA 520 तक आपने analytical procedures किया है. And in this chapter we'll also be covering 2 essays on joint auditing and branch audit. तो ये कहाँ पर लिखा है? That the auditor has to comply with the auditing standards. So it is mentioned in section 143 subsection 9 of the Companies Act, that every auditor shall comply with the auditing standards. बस इतना ही है section 143 subsection 9. ठीक है. That every auditor shall comply. अब कब करोगे comply? जब आप audit करोगे. ठीक है. So this was about what? Section 143 subsection 9. ठीक है. And section 143 subsection 10 is also something about auditing standards. So it basically says that when the ICI recommends the auditing standards, the CG will, central government will, in consultation with National Financial Reporting Authority, it will issue what? Auditing standards. ठीक है. So the central government may prescribe the standards on auditing as recommended by institute. और वो कैसे standards prescribe करेंगे? CG will, in consultation with and after examination by the recommendations made by what? NFRA. ठीक है. So ICAI will recommend,
NFRA will examine, and then CG, central government, in consultation with NFRA, will prescribe the auditing standards. तो इतना ही है with respect to auditing standard in section 143 subsection 9 and section 143 subsection 10. Now quickly tell me, duty to report on fraud is clear to all of you? Section 143 subsection 12. You all have done this in detail in your chapter number 5. Quickly send in your replies. Yes, Nilabju, with respect to rule 3 and rule 6, देखो प्रोसीजर तो सेम रहेगा ना. रूल 6 में क्या है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स में स्पेसिफिकली बस इतना ही मेंशन है 2 क्लॉजेस में, दैट वेरेवर देयर इज ऑडिट कमिटी, तो ऑडिट कमिटी का रिकमेंडेशन कंसीडर करना है. एंड रूल 3 इज इन डिटेल अबाउट द एंटायर प्रोसेस. ठीक है नीलाब्जू, इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ so this is clear, 143 subsection 12, that reporting to central government will be there if in the course of the audit the auditor has a reason to believe that a fraud which involves or is expected to involve individually an amount of rupees 1 crore or above, तो किसको reporting जाएगा? central government को. अगर less than 1 crore है तो किसको reporting जाएगा? audit committee and board को. and in this case जहां पर central government को reporting नहीं गया है, तो the same shall be disclosed in what? the board's report. ठीक है, यहां तक आई थिंक ये क्लियर है. तो आई एम नॉट टेकिंग सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 इन डिटेल. ठीक है. नाउ सेक्शन 143 सबसेक्शन 13 है ना. सो प्लीज स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर इन योर चैप्टर नंबर 1 you have done that auditor needs to maintain confidentiality. ठीक है. नाउ टेल मी, ऐसे तो अब ऑडिटर इज रिपोर्टिंग द फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. ऑडिटर इज रिपोर्टिंग समथिंग अबाउट द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बताओ कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या हुआ? अब इज इट हैम्पर्ड? येस और नो? कॉन्फिडेंशियलिटी पे क्या हुआ? So section 143 subsection 13 says that this section 143 subsection 13, it safeguards the act of fraud reporting by the auditor if it is done in what? Good faith. So if the intentions of the auditor are clear, they are good. So if the reporting is genuinely done in good faith, then it will not be deemed कि auditor ने confidentiality maintain नहीं की. ठीक है. So reporting is required. उससे confidentiality, auditor cannot say that I did not report because confidentiality hamper हो जाता. नहीं. So section 143 subsection 13, it safeguards the act of reporting by the auditor if it is done in good faith. ठीक है. It states that no duty, just read, no duty to which an auditor of the company may be subject to shall be regarded as having been contravened. तो कौन सा ड्यूटी है ये? कॉन्फिडेंशियलिटी का. By reasons of his reporting the matters if it is done in what? Good faith. तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 13 क्या बोलता है कि अगर आपने 143 सबसेक्शन 12 में कोई भी फ्रॉड रिपोर्टिंग किया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑडिटर यू नीड नॉट वरीड. इफ यू हैव डन दिस इन गुड फेथ, देन no duty of your with respect to confidentiality will be deemed to have been contravened. ठीक है, सिंपल है ना? Yes, absolutely. Siddharth is saying he is doing this in order to protect the interest of the stakeholders. ठीक है, correct. ठीक है. Now section 143 subsection 14, it basically says, this is 14, it basically says that whatever with respect to fraud reporting we have seen in section 143 subsection 12 and 13 above, it applies on the same lines mutatis mutandis to a cost auditor and a secretarial auditor in performance of his duty under section 148 and section 204. So the reporting, the duty to report the fraud and this good faith point, it applies same to whom? To a cost auditor when he is conducting a cost audit and secretarial auditor also.
ठीक है, is it clear? तो this was section 143 subsection 14 and this penalty is with respect to section 143 subsection 15. तो 12, 13, 14, 15 as such subsections, they as such relate to what? Fraud reporting only. तो 143 subsection 12 में तो क्या है कि रिपोर्टिंग सीजी को कब जाएगा, ऑडिट कमिटी बोर्ड को कब जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट्स में कब आएगा एंड द टाइम पीरियड. ठीक है. 143 subsection 13 क्या बोलता है? दैट इफ इट इज डन इन गुड फेथ then the duty of the auditor would not be deemed to have been, would not be regarded as what? Contravened. ठीक है. 143 subsection 14 क्या बोलता है? ये सब कुछ apply mutatis mutandis, that is on the same lines it will apply to whom? The cost auditor and the secretarial auditor. And 143 subsection 15 क्या कहता है? that अगर subsection 12 को आपने नहीं follow किया, जो reporting requirement है, then in case of listed company, the auditor, cost accountant या company secretary shall be liable to pay a penalty of rupees 5 lakhs, and in case of other than listed company, the penalty amount will be what? 1 lakh rupees. Further, today we'll be doing CARO 2020. You will see in point number 11 of paragraph 3, reporting with respect to the fraud which has been reported to central government. That reporting is to be done in CARO report also by the auditor. ठीक है. So with this, we have completed what? The sections relating to your fraud reporting, that is section 143 subsection 12, section 143 subsection 13, 14 and 15. Is it clear? Smitha, your query is not clear to me. Please send it again. ठीक है. ठीक है. Now, this is what? Section 143 subsection 11. So this is what relating to CARO 2020. ठीक है. तो I'll take this after when we start CARO 2020. तो section 143 subsection 11 देखो basically क्या है? This subsection gives a right to central government कि central government, if you feel that some other reporting is also to be done now, then you have the right under section 143 subsection 11. And students, using this power which is given in section 143 subsection 11, central government has notified what? CARO 2020. ठीक है. So see, the central government may, in consultation with NAFRA, that is National Financial Reporting Authority, by general or special order in respect of such or class of companies as may be specified in the auditor. The auditor's report shall also include a statement on such matters as may be specified therein. And what are those matters? There are 21 matters in CARO 2020 which we'll be doing today. ठीक है. तो ये CARO 2020 का it is mentioned here. ठीक है. Now with respect to point number 7, this relates to what? Branch auditor's report. ठीक है. So today in the next session when we'll be doing SS 600, I will cover up this point at that moment, and this is basically what? Section 143 subsection 8 है ना. तो ये हम डिटेल में कब करेंगे? जब हम SS 600 नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ठीक है. And the last point of this subsection, it says that, which is what? Section 143 subsection 4. It states that if there are any qualification or negative report, मतलब section 143(3) में बहुत सारे points थे ना. So let's say this first point, whether the auditor has sought and obtained all information. So let's say here it is in negative, adverse remark that auditor has not obtained. ठीक है. So what does section 143 subsection 4 says? It says that in such a situation, it is the duty of the auditor to state the reason for qualification or negative report. अगर auditor कुछ भी negative बोल रहा है, तो कुछ reason होगा ना, तो वो reason shareholders को, members को आपको audit report में लिख के बताना है. Where any of the matters required to be included in the audit report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor. Clear? So let us have a look at the entire section 143. So what is the name of the section? Power and duties. So powers and duties of auditors and auditing standards.
and the various subsections are, so I'm repeating it again, that these subsection as such, these are not the name. So the name of the section that you may learn is what? Powers and duties of auditors and auditing standards. Okay. For concept clarity, एक sequence के लिए, linkage के लिए, I have given you this summary. So subsection 1 में हमने क्या देखा? Section 143 subsection 1 में powers, rights of auditor and duties also, है ना? Duty to inquire on certain matter. Remember, वो भी तो देखा था ना, वो भी section 143 subsection 1 में था, ठीक है? Auditor shall make a report to members. ये कहाँ देखा था? Section 143 subsection 2. Auditor report shall also state, यहाँ पे 10 matters देखे थे ना, A to J, right? Matters in negative qualification require reasons. ये जो अभी हमने last read किया. Clear? Subsection 5, 6, 7, these relate to what? Government companies. And I told you that these will be done in detail in chapter number 13. So subsection 5 deals with what? Directions given by CAG. Subsection 6 deals with supplementary audit and subsection 7 deals with what? Test audit. So abhi I am not taking this in detail because यहाँ पर detail में है ही नहीं, chapter number 13 में आप इसको detail में पढ़ोगे. Clear? Subsection 8 is with respect to audit of accounts of branch office. I told you जब हम next session में SC 600 पढ़ेंगे, then I'll take up this subsection. Subsection 9 and 10 relates to auditing standards. जहाँ पर 143 subsection 9 क्या बोलता है? That there is a duty on the auditor to comply with auditing standards. And subsection 10 क्या बोलता है? That the CG may prescribe the auditing standards recommended by ICI in consultation with or after examination of NAFRA, National Financial Reporting Authority. Clear? Subsection 11 में हमने क्या देखा कि CG के पास स्पेशल पावर्स है और वो हम कब करेंगे? कैरो 2020. ठीक है? अच्छा, where are the other sections? ठीक है, wait. Subsection 12 is relating to what? Fraud reporting. Clear? Subsection 13 is relating to good faith. If fraud reporting is done in what? Good faith. Subsection 14 says that it will apply to cost auditor and company secretary on mutatis mutandis basis, and 15 consists of penalty if subsection 12 is not complied with. Clear? So समझ आया? So as such, please do not think कि ये sequence को आपको memorize करना है या कुछ. This is just for a better understanding to create a linkage between all the subsections, and एक summary mind में होती है ना, then you are in a position to know कि अच्छा ठीक है, ये 143 में थे सारे subsections, ठीक है? So I hope this entire section 143, the name of the section is what? Powers and duties of auditor and auditing standards. ठीक है? Is clear to you. कुछ भी doubt है तो please let me know, and after this we'll be starting with what? CARO 2020. See, Hiral has a doubt with respect to section 143 subsection 13. So see what is mentioned here. Subsection 13 of section 143 of Companies Act safeguards the act of fraud reporting by the auditor if it is done in good faith. It states that no duty to which an auditor of a company may be subject to shall be regarded as having been contravened by the reason of his reporting the matter above if it is done in good faith. तो हीरे आप बताओ फिर, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं समझ आ रहा है इसमें, तो कौन सा वाला ड्यूटी आप ऑडिटर की बोलोगे? बताओ हीरल. आप पढ़ के देखो ना, रीड इट ट्वाइस हीरल, यू विल बी एबल टू नो. ठीक है? See, remembering the sections, Sahu, if you go through, I told you now, see, the technique that I follow is I remember the picture of the page, whereby the section, subsections, or everything like this is
written. So always try to summarize and make it a bird's eye view, है ना? तो वो आपको remember करना easy है. Let's say if you get something with respect to section 143 subsection 14, that provisions shall apply to cost auditor and company's secretary. So in which section is it contained? 139, 140, 143. तो अगर एक summary सामने है ना, एक आपने sequence flow of section subsections को या section को पूरा detail में देखा हुआ है कि section में क्या क्या contained है in a short form. So you will be able to remember the correct section. ठीक है? And I'm telling you again, as such subsections को memorize मत करो जो मैंने mention किए हैं. Whatever is given in the module is enough. ठीक है? I have given you all the subsections individually for your better understanding of it. ठीक है? Khushia Sahu, is it clear? So students tell me, so Bhardwaj is saying, ma'am, it is clear. Nilabjo is also saying it is clear. So shall we proceed further with a very important and very interesting topic, CARU 2020. So thank you, Krishna. ठीक है. So CARU 2020. Companies, auditors, report, order. ठीक है. So tell me, जो last session में मैंने आपको बोला था that you need to revise the disclosures given in chapter number 9. So have you gone through all those disclosures? Yes, Smita, you are correct. Law related to confidentiality. So students, देखो, जब हमने section 143 subsection 3 पढ़ा, whereby we have done 10 points, remember? So it was mentioned there that the auditor shall state, with respect to 10 points, and it is applicable to all the companies except for that internal financial control wala point, that is not applicable with respect to few companies that was mentioned there. ठीक है? Right? Now section 143 subsection 11. ठीक है ना? Section 143, just a minute. Let me just take you to that subsection. So let us read this again. Section 143, subsection 11. So the CG under section 143, subsection 11, it has reserved a right to prescribe additional reporting. So this reporting of CARU 2020 is in addition to whatever we have already done. 143 subsection 1 में क्या था? 6 matters थे जो auditor को inquire करना था और report करना था if he has special comments to make. Section 143 subsection 3 में we have studied 10 points where the auditor shall state, whatever are his remarks. Now this is an additional reporting, and who has the power to prescribe such reporting? The central government in consultation with National Financial Reporting Authority. So what is the power that is given here? The central government may, in consultation with National Financial Reporting Authority, by general or special order, direct in respect of such class or description of companies. So what is the class or description of companies? We will do that as may be specified in the order, that the auditor's report shall also include, मतलब जो पहले reporting है वो तो करनी ही है. So this is what? This is an additional reporting requirement on such matters as may be specified therein. So such class of companies जो order में specified है, उन matters पे जो orders में specify हैं. ठीक है? So so we can say that this order, the CARU reporting, is applicable with respect to some companies which is mentioned in the order itself.
है ना। तो 143 सबसेक्शन 3 की जो रिपोर्टिंग थी 10 पॉइंट्स, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला पॉइंट, है ना। However, this is applicable with respect to some class of the companies. Is it clear? ठीक है. Now, students, this essay 2020, this is in supersession of, sorry, the CARU 2020 is in supersession of what? CARU 2016. है ना. 2016 CARU से पहले ना there was CARU 2003. There was CARU 2015, 2016, है ना, and these 15 and 16 were under the Companies Act 2013 only, है ना. तो ये CARU 2020 की क्या नीड होती है? तो देखो कुछ एडिशंस करने हैं इन 2016 या कुछ डिलीशंस करने हैं. सो कैरो को अपडेट किया गया है एंड कैरो 2020 आफ्टर कंसल्टेशन विद एनएफआरए सीजी हैज मेड व्हाट कैरो 2020 and earlier it was supposed to be applicable from financial year 1920 but because of the pandemic ये कब से applicable हुआ, defer कब हो गया इसका, from financial year 2021. क्लियर है. अ ब्रीफ अबाउट व्हाट कैरो 2020 इज. एडिशनल रिपोर्टिंग है, किसके पास पावर है, किस किस पर एप्लीकेबल है इज मेंशन इन द कैरो इटसेल्फ. what all are the requirements of reporting are also mentioned in the कैरो itself. ठीक है. नाउ कैरो 2020 ये जो ऑर्डर है ना, सो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, अब ये समझ आता है ना, ये एडिशनल रिपोर्टिंग है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम जो ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है. बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, शैल ऑल्सो स्टेट. सो देर आर 4 पैराग्राफ्स इन दिस ऑर्डर. पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4. बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा स्टूडेंट्स, पर कुछ भी मिस मत करना अभी बीच में. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, I'll try my level best to make you learn also all these points. ठीक है. So 4 paragraphs are there. Paragraph 1 is with respect to applicability. किस किस के ऊपर applicable है. Paragraph 2 says that auditor's report should contain matters specified in paragraph 3 and 4. Paragraph 3 में वो matters हैं and paragraph 4 में बोला गया है कि reasons बताने हैं. जैसे आपने section 143 subsection 4 पढ़ा ना, that with respect to any qualified remark reasons are to be stated. Same way here also it is mentioned in paragraph 4 that reasons are to be stated. ठीक है. Now let us start with paragraph 1. The name of the paragraph is what? Short title, application and commencement, है ना. So I told you commencement के लिए तो that financial and 1920 के लिए से commence होना था इसको, but because of the pandemic it was deferred and became applicable from financial year 2021 and CG notified it on what? 25th Feb 2020. ठीक है. Now with respect to applicability, so CARO 2020 is applicable on every company including foreign company. ठीक है. It is applicable to every company including foreign company. Why foreign company is mentioned separately here? Because the definition of company in the Companies Act section 2, यहाँ पर company को कैसे define किया गया है? A company which is registered under this act or earlier acts, है ना. तो foreign company as such is not included. So that is why foreign company is separately mentioned here, that it is applicable to every company. And it including what? Foreign company. Clear? Now there are certain exceptions कि with respect to these companies that CARO reporting is not required. ठीक है. So what happens is, देखो ये क्या है आपको पता है, additional reporting है. ठीक है. तो पहले सीजी ने क्या बोला, that it is applicable to every company. ठीक है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू एक्सेप्शंस. तो बैंकिंग कंपनी सीजी के पास जाते हैं और कहते हैं that we have already so much reporting requirements as per the banking regulation act 1949, है ना. बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, तो हमें और क्यों एडिशनल रिपोर्टिंग दे रहे हो. सो द बैंकिंग कंपनी गेट्स एन एक्सेप्शन दैट ठीक है, कैरो ऑर्डर
2020 or the previous also, they will not be applicable to banking company. Why? Because वो banking regulation act 1949 में already इतनी सारी reporting कर रहे हैं ना, तो additional reporting यहाँ पर सीजने का okay. Same with respect to insurance company, they are already reporting and they are under what Insurance Act 1938. So उनको भी exempt कर दिया गया, exception दे दिया गया that they are also not required to report under, the auditors are not required to give CARO reporting with respect to banking company and insurance company. अब section 8 companies जो होती हैं आपकी, है ना, which are formed with the charitable object, तो इनको थोड़ी ना एडिशनल रिपोर्टिंग के लिए बर्डन करेंगे, है ना, बिकॉज देखो एडिशनल रिपोर्टिंग अगर ऑडिटर कर रहा है, ऑडिटर विल बी आस्किंग ऑल दोज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ ना, कंपनी से ही तो सब इंफॉर्मेशन लेगा ना ऑडिटर, सो कंपनी के ऊपर भी तो एडिशनल सब चीजें आ गई है ना, सो दैट इज वाई सेक्शन 8 कंपनी को भी एक्सेप्शन दिया गया. 1 person कंपनी, स्मॉल कंपनी, है ना, वी ऑल हैव डन क्लॉज 62 सेक्शन 2 का, एंड दिस इज व्हाट क्लॉज 85, है ना, डिफाइन हमने पढ़ा था ना लास्ट सेशन में, जब हमने सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी पढ़ा था, दैट सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑडिट 20 बट इट शैल नॉट इंक्लूड ऑल दिस कंपनीज. सो 1 person कंपनी और स्मॉल कंपनी को भी एक्सेप्शन में रख दिया गया. तो बैंकिंग कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनीज को, 1 person कंपनी एंड स्मॉल कंपनी को एक्सेप्शन में रख दिया गया. ठीक है. Now the private limited company, they are also exempt, they are also one of the exceptions, but subject to fulfillment of certain conditions. So all private company पर CARO नहीं applicable है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती. So what all are the companies, private limited companies to which CARO 2020 reporting is not applicable? We will do that. But उससे पहले बताओ that अभी तक जो भी पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू CARO 2020 क्लियर है, समझ आ रहा है? कैन वी प्रोसीड इन दिस मैनर? कुछ डाउट है तो प्लीज सेंड इट अगेन, सेंड इन योर क्वेरीज क्विकली. So I'm waiting for your replies. ठीक है, तो हमने पैराग्राफ 1 में अभी क्या पढ़ा? इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1 person कंपनी एंड स्मॉल कंपनी. ठीक है. Now it is not applicable to private limited company if certain conditions are fulfilled. And what are those? Such company is not being a subsidiary or holding of a public company. If a private limited company is a subsidiary of a public company, then CARO becomes applicable. CARO reporting is required. ठीक है. इवन इफ अगर ये वाला कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक्सेप्शन, आपको कुछ एग्जेम्पशन दे रहे हैं कि CARO की रिपोर्टिंग नहीं चाहिए. एंड इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस सेशन दैट जहां पर भी एक्सेप्शन मिलता है ना, जहां पर भी आपको किसी चीज से एग्जेम्पशन मिलता है, तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बोलते हैं. और जहां पर भी एप्लीकेबिलिटी होती है तो वहां और से कनेक्टेड होता है कि इसमें से कुछ भी हो जाएगा तो आपको ऑडिट कमिटी बनाना पड़ेगा फॉर एग्जांपल. और जहां पर एग्जेम्पशन है वहां एंड से कनेक्टेड होता है. ठीक है. सो व्हाट आर द कंडीशंस दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ द सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो ये कंडीशंस देखने की जरूरत ही नहीं है, CARO एप्लीकेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. ठीक है. And so wherever I have written plus here, it means and. ठीक है. And if the paid up share capital and reserves is not more than 1 crore as at the balance sheet date, and if the total borrowings from banks and financial institution is not more than 1 crore at any point of time during the financial year, किसी भी टाइम पे, बैलेंस शीट डेट में नहीं बोल रहे हैं, है ना. इट माइट बी पॉसिबल ना दैट ड्यूरिंग द ईयर 1.5 crore था एंड आपने रीपे कर दिया, बैलेंस शीट डेट पे जो था ये लेट्स से 90 lakhs था. ठीक है. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर अगर आपका टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीड्स 1 crore, तो CARO एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी. एंड इफ द टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल
3 is not more than what 10 crores during the financial year. So if all these conditions are satisfied, मतलब कैरो कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा, it will not be applicable to a private limited company which is not a subsidiary or holding of a public company. अगर वो subsidiary या holding है, straight forward कैरो applicable हो जाएगा, बाकी conditions देखने की जरूरत ही नहीं है. Why? Because this is connected by and. ठीक है. And the let's say it is not a subsidiary and holding of a public company. So next condition क्या देखेंगे? That the paid up share capital and reserves should not be more than 1 crore as at the balance sheet date. The total borrowings from banks and financial institutions should not exceed 1 crore at any point of time during the financial year. And the total revenue as per schedule 3 is not more than 10 crores during the financial year. Clear है? तो private limited company. So you may get a question whereby ये वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं एंड समवेयर इन द क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन दैट इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. तो इवन दो दीज कंडीशंस ऑल द कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड बट दिस आल्सो नीड्स टू बी फुलफिल्ड दैट इट शुड नॉट बी अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी. सो दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू पैराग्राफ 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द CARO 2020. So quick revision that it is applicable to every company including foreign company, with the exception of banking company, insurance company, Section 8 companies, one-person company and small company, private limited company, which is not being a subsidiary or holding of a public company, and where the paid-up share capital and reserves do not exceed what 1 crore as at the balance sheet date. The total borrowings from banks, financial institutions do not exceed rupees 1 crore at any point of time during the financial year, and total revenue as per schedule 3 it does not exceed 10 crores during the financial year. So if all these conditions are satisfied, then only there is an exception, there is an exemption for what? Private limited company. ठीक है. सो कैसे इसको याद करना है? तो देखो एडिशनल रिपोर्टिंग है ना, तो पहले तो क्या बोला, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, बट कंसीडरिंग द सिचुएशंस की बैंकिंग कंपनी तो ऑलरेडी इतना रिपोर्टिंग कर रहा है, सेम इज इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को क्यों बर्डन करना है, लेट and same applies to what one person and small company. And then with respect to private limited company, satisfying all these criteria. Okay, so is it clear? Quickly send in your replies, then we will move ahead with paragraph number 2. I'm 100% sure that if you just listen to the discussion that we are having now with concentration, Hana, it is going to be crystal clear to you. And learning will also be done to some extent in the session itself. है ना? So send in your replies. Clear है इतना? Paragraph 1. So I mentioned here one person is defined in clause 62 and small company is in clause 85. ये आप कर चुके हो in our first or second session. So Gehani is saying, I'm crystal clear. Krishnan is saying yes. Shreya, Siddharth, Karthik, all are saying I'm clear. That's good. Now, paragraph number 2, it says that auditors report to contain matters specified in paragraph 3 and 4. Okay? And then, see, it is mentioned here that every report shall, in addition to the matters specified in section 143, तो ये 10 clauses की बात कर रहा है, to which, so every report to which order applies, for financial year commencing on or after 1st April 2019, I told you that it was deferred due to pandemic and it became applicable from financial year 2021. ठीक है. Shall in addition, मतलब जो 143 subsection 3 में है, 143 subsection 1 में है, it shall in addition to that contain matters specified in paragraph 3 and 4. ठीक है. And CARO 2020 is not applicable to consolidated financial statement except for clause 21 of paragraph 3. अब ये क्या है? अभी के लिए just try to understand that it is not applicable to, like, with respect to audit of consolidated financial statement, the CARO reporting, this additional reporting is not required. ठीक है? Is it clear? Is it clear? Send in your reply. So this was with respect to paragraph number 2. जहां पर क्या बोला है 143 के addition में requirement है paragraph 3 और 4 की, और consolidated financial statement में it shall not be applicable.
चलो, is it clear? So Hiral, if it exceeds 1 crore, if it exceeds 10 crores, then applicability आ जाएगी. Less than equal to है, फिर exemption मिल सकती है if all the conditions are satisfied. Hiral, is it clear? Yes, whatever Hiral you have mentioned is correct. है ना? Less than equal to भी है, तो भी exception में है. If it exceeds, ठीक है, then exception नहीं होगा. Hiral, is it clear? Now with respect to paragraph 3. So I told you that there are 21 clauses which we need to discuss. And what is the name of the paragraph? Matters to be included in auditor's report. What are the matters to be included in auditor's report? And this is what additional reporting requirement given by what? CARO 2020. Yes, Bindu, you are correct. But जब हम clause 21 discuss करेंगे, then I'll take this consolidation वाला point. ठीक है? Now let us have a quick look at all the 21 points. And students, ये जो मैंने 21 points लिखे ना, these are not the headings as such, है ना? So if you look at your module, तो CARO देखो कैसे होता है ये. So these are the exceptions, है ना? And ये आप examples देख सकते हो कि whether it will be applicable or not. And these examples, चलो एक example देख लेते हैं, because you can get this example as MCQs or case scenario or true false. So Ashu Private Limited, I am on page number 10.42, example number 2. Quickly, I need answers, but do not look at the answers given in the module. So Ashu, this is what Private Limited, ये समझ आता है, has a fully paid up share capital plus reserves of 50 lakhs. During the year, the company had borrowed 70 lakhs each from bank and financial institution. It has a turnover of 100 lakhs. ठीक है? Now, whether CARO 2020 will be applicable or not. Send in your replies. देखो, 3 conditions हैं. Paid up share capital. अच्छा, यहाँ पर subsidiary. Okay, there are 4 conditions. Subsidiary या holding तो नहीं है public company की. Paid up share capital plus reserves देखना है हमें. Then we have to see what? The borrowings. And then we have to see what? Turnover. तो पहला वाला तो नहीं है, मतलब इसमें तो exception है. ठीक है? पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स 1 करोड़ से कम है, तो इसमें भी एक्सेप्शन है, बिकॉज एंड है ना, तो सारी कंडीशन देखना पड़ेगा. बोरोविंग्स जो है कंपनी की 70 lakhs ईच फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब 1.4 करोड़, लेकिन आपका लिमिट कितना है? 1 करोड़. तो यहाँ की एक्सेप्शन चलेगी, आगे की मैं देख ही नहीं रही. व्हाई? बिकॉज एंड है ना, तो बोरोविंग्स की वजह से therefore it fails to fulfill the condition regarding borrowings. Thus CARO 2020 shall be applicable. और अगर यहीं पर आपको क्वेश्चन में कहीं होता, लेट्स से यहाँ पर 70 lakhs की जगह लेट्स से यहाँ पे होता आपका 40 lakhs each, लेट्स से, बट बीच में कहीं मेंशन होता that ABC Private Limited which is a subsidiary of a public company, है ना? So वहीं पर देख के आपको क्या पता चल जाएगा that CARO is applicable. ठीक है? Why? Because subsidiary of a public company हो गया ना, तो applicability आ जाएगा. Clear? हाँ, so Siddharth is saying that he didn't focus on this word each. देखो स्टूडेंट्स, आपको ना सब कुछ आता होता है, बट वो एग्जाम में जो एंजाइटी या जो भी होता है ना, उसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. Each and every word in the entire question paper is very very important. आपने ट्रू फॉल्स में अगर ये ईच वर्ड नहीं पढ़ा या एमसीक्यूज में नहीं पढ़ा, केस सिनेरियो में नहीं पढ़ा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, है ना? सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ठीक है? नाउ पैराग्राफ 3 and 4 ये था. अच्छा, मैं क्या बता रही थी आपको? हाँ, so I was telling you that I've made a summary of all the 21 clauses. So CARO 2020 जो है ना, वो ऐसे ही है.
If you look at Caro 2020 at the MCA website, तो वो ऐसे ही आएगा. तो कोई headings नहीं है as such. So that summary that I've created is for making the learning, making the understanding easy. And I've told you that जब ये summaries आपके सामने होती है ना, then you are able to remember कि कौन से clause में आ रहा है, कि ये वाला paragraph भी आ रहा है या नहीं. ठीक है? So is it clear? ठीक है? So Clause 1 is with respect to reporting on property, plant and equipment and intangible asset. Clause 2 is with respect to reporting on inventory. Now, see, this is not the reporting related to whether AS2 follow किया या नहीं, या let's say PPE के केस में whether AS10 वगैरह सब follow किया नहीं, वो सब नहीं देख रहे हैं हम. Specific reporting requirements हैं जो Caro 2020 में mentioned है. The auditor needs to report on those matters only. ठीक है? So clause 3 relates to investment guarantee, security or loan. ठीक है? This is what again made by the company. जो भी investment guarantee या loan the company has given. Clause 4 relates to section 185 and 186. What are section 185 and 186 of the Companies Act? जैसे ये clause आएगा, we'll discuss that. Clause number 5 relates to public deposits. Clause number 6 relates to cost records. 7 is relating to statutory dues, like your PF, Provident Fund, ESI, your GST, income tax. Clause number 8 relates to the transactions which are not recorded in books of accounts now has been surrendered under the IT Act. Tell me, ये point कहीं पढ़ा है किसी ने? बताओ. Clause number 8 किसी ने पढ़ा हुआ है? Send in your replies. A hint, it is contained in chapter number 9. ठीक है? Clause 9 relates to repayment of dues loan taken by the company. तो अभी जो ऊपर हमने clause 3 पढ़ा, उसमें क्या था? Loan, security, guarantee, investments given by the company. और clause number 9 में क्या है? Repayments of dues loan taken by the company. Clause 10 relates to initial public offer, further public offer, preferential allotment या private placement. Clause 11 relate to fraud. Remember, आज हमने ये पढ़ा भी है ना? Clause 12 relates to निधि company. What are निधि company? ये हम discuss करेंगे. Clause 13 relates to related party transaction. 14 relates to the reporting requirement with respect to internal audit system, section 138 में जो है. 15 relates to the non-cash transactions under section 192 of the Companies Act. Clause 16 relates to NBFCs. Clause 17 relates to cash losses of the company. So reporting with respect to cash losses. 18 relates to reporting with respect to resignation by a statutory auditor. Section 140 थोड़ा बहुत याद होगा ना? In fact, सब याद होना चाहिए. So we will be discussing this again here. Clause 19 relates to going concern. Clause 20 relates to corporate social responsibility, which are given in section 135. So reporting by the auditor with respect to certain matters relating to CSR as specified in this order. And clause 21 relates to what? Consolidated financial statements. Yes, so many of you are saying yes ma'am padha hai chapter number 9 mein. That is good. Okay. Now with respect to the first clause, property, plant and equipment and intangible assets. ठीक है? So देखो बैलेंस शीट में जो फर्स्ट 2 एसेट्स आते हैं, क्या आते हैं आपके? फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंटरी. तो पहले तो जो 2 पॉइंट्स हैं, 2 क्लॉजेस. सो फर्स्ट पॉइंट रिलेट्स टू योर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड सेकंड क्लॉज रिलेट्स टू योर इन्वेंटरी. ठीक है? So property, plant and equipment and intangible assets. With respect to these, the auditor needs to report on 5 points which have been specifically mentioned in the Caro report. So देखो जहां पर auditor specifically writing में देगा that ठीक है इन सारे points को I have checked and this is the position.
तो देखो ऑडिटर डेफिनेटली चेक करेगा ना वो वाले सारे पॉइंट्स, है ना. दैट इज वाई एडिशनल रिपोर्टिंग दिया है, दैट विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज टू विच कैरो इज एप्लीकेबल, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर इज डूइंग ऑलरेडी, है ना, वो तो करना ही है. बट एज पर दिस ऑर्डर ये वाले 5 पॉइंट्स में भी स्पेसिफिक रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड. ठीक है. So with respect to property, plant and equipment and intangible assets, and you will see that बहुत simple है. ठीक है. So first point, the auditor needs to report whether proper records with respect to quantity and situation of property, plant and equipment has been maintained by the company. Further, the auditor needs to report whether proper records with respect to full particulars of intangible assets have been made by the company. तो ऑडिटर जब कैरो की रिपोर्टिंग करेगा ना तो वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन करेगा दैट जो मैंने चेक किया उसके बेसिस पे जो क्वांटिटी ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड द सिचुएशन कहां पर एग्जिस्ट करते हैं वो, सो वेदर दैट हैज बीन मेंटेन्ड और नॉट. ठीक है. सेम वे वेदर द फुल पर्टिकुलर्स with respect to the intangible assets, whether these have been, the records have been maintained, proper records have been maintained or not. Clear? ठीक है. अभी do not go to निधि company straightforward हितेश, we will do that later on, है ना. Be with me, I told you कि concentration से सुनो, all the clauses are going to be crystal clear to you. तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट प्रॉपर रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड सिचुएशन ऑफ पीपीई, वेदर दीज हैव बीन मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, एंड वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स कंटेनिंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स. क्लियर. नाउ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपीई, क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की है या ऑडिटर की है? क्विकली आई नीड योर आंसर्स एंड क्विक आंसर्स बिकॉज वी नीड टू कंप्लीट दिस कैरो टुडे. Whose responsibility is, primary responsibility किसकी है? Physical verification of property, plant and equipment. Hitesh, you are correct, but निधि कंपनी जब आएगा तब डिस्कस करेंगे डिटेल. So it is the responsibility of the management. तो यहाँ पर ऑडिटर को स्पेसिफिकली बोला गया है कि कैरो 2020 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे जब रिपोर्टिंग आएगी, सो ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट वेदर द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स. ठीक है. एंड इन केस ऑफ एनी मटीरियल डिस्क्रिपेंसी, देखो ऐसे 320 ना, मटीरियलिटी से ही तो हम कंसर्न होते हैं ना, वेदर द सेम हैज बीन प्रॉपरली डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. सो सिंपल है. पॉइंट नंबर 3, अब जहां पर भी आपके नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 9 आर बीइंग यूज्ड ना, स्पेसिफिकली मेंशन किया आपने चैप्टर नंबर 9 में नोट्स में पढ़ा हुआ है. सो बेसिकली इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द बेसिक आइडिया कि शेड्यूल 3 में देयर आर सम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑन द मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स. नाउ हियर अंडर कैरो देयर इज अ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑडिटर कि ऑडिटर चेक करो कि वो डिस्क्लोजर्स आर एज पर शेड्यूल 3 और नॉट, है ना. तो अगर आपको शेड्यूल 3 के रिपोर्टिंग पता है जो आपने चैप्टर नंबर 9 में किया है तो यहाँ तो बहुत क्विकली हो जाएगा. बाय बिकॉज यू नो कि मैनेजमेंट को वहां क्या रिपोर्ट करना है, ऑडिटर को यहाँ पर वो ही चेक करना है एंड शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है. ठीक है. सो पॉइंट नंबर 3, वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी other than those on lease, because lease वाले केस में तो the company is a lessee ना, so title deed lesser के नेम पे होगी ना. So other than the lease, whether the title deeds of the immovable property are held in the name of the company, and if not, the auditor needs to give 6 details. So what are those details? Description of the property, gross carrying value, हेल्ड इन द नेम ऑफ, क्योंकि कंपनी के नेम में तो है नहीं, वेदर वो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, रिलेटिव है, एम्प्लॉय है, पीरियड हेल्ड, इंडिकेट रेंज वेयर एप्रोप्रिएट, एंड रीजंस फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी. कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, सब कुछ मेंशन करना है. ये पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 9 में बहुत अच्छे से नोट्स में. बताओ क्विकली बताओ. यस हीरल, यू आर करेक्ट. ठीक है. सो
With respect to title deeds, auditor will see whether whatever immovable property are disclosed in the financial statement, except for those held on lease, whether title deeds are held in the name of the company, and if not, then auditor has to give what? This 6 details. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है? I've mentioned it like this. मतलब you need to refer to that table. ठीक है? Next point. Whether company has reevaluated the property, plant and equipment, intangible assets or both. And if you remember, chapter 9 में specific disclosure requirement on the management कि अगर आपने revalue किया है तो वो register valuer है या नहीं. So auditor will also mention here, report here, whether registered valuer ने valuation किया है ना, and specify the change. If it is more than equal to 10% change in aggregate net carrying value of each class of PPE or intangible assets. So basically again materiality तो हो रही है ना, that if more than equal to 10% change है तो आपको mention करना पड़ेगा if the change is more than equal to 10% change in aggregate net carrying value of each class of asset, then that also needs to be specified by the auditor. मैनेजमेंट के ऊपर शेड्यूल 3 में रिक्वायरमेंट थी, ऑडिटर के ऊपर कैरो 2020 में रिक्वायरमेंट है. ठीक है? एंड द लास्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पीपीई इज व्हाट? वेदर एनी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड एंड पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर बेनामी प्रॉपर्टी, एंड इफ यस वेदर द सेम हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो व्हाट इज अ बेनामी प्रॉपर्टी? यू ऑल हैव डन दिस इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 9. सो बेसिकली वेयर अ पर्सन बाइज अ प्रॉपर्टी विद हिज ओन मनी, but in the name of another person without the intention to give benefit to that other person. किसी और के नेम में हेल्प किए, दो पैसा लेट्स से मेरा लगा हुआ है, बट वो नेम किसका है? किसी और डिस्टेंट पर्सन का. ठीक है? सो बेनामी प्रॉपर्टी के लिए अगर अंडर द Benami Transaction Prohibition Act 1988, if any of the proceeding is initiated and pending against the company, तो section schedule 3 में reporting requirement किसके ऊपर? अब management के ऊपर. अब management ने तो report कर दिया, but auditor shareholders को भी बताएगा ना कि देखो ये ऐसा हुआ है. There are certain proceedings which are initiated and pending for Benami property, and the same are disclosed here. So whether disclosing financial statement or not. ठीक है? ठीक है? अब देखो ये वाला विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोसीडिंग पॉइंट चैप्टर नंबर 9 में कवर्ड है ये भी. ठीक है? ये रिवैल्यूएशन वाला भी एज इट इज चैप्टर नंबर 9 में कवर्ड है ना. टाइटल डीड्स वाला भी एज इट इज चैप्टर नंबर 9 में कवर्ड है. और जो ये आपने फर्स्ट एंड 2 सेकंड पॉइंट्स किया है, ये व्हेन वी वर डूइंग फिजिकल वेरिफिकेशन, है ना, इन्वेंट्री के लिए किया बेशक, ये सब था ना कि रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है या नहीं, फिजिकली वेरीफाइड रीजनेबल इंटरवल्स पे है या नहीं. सो नथिंग न्यू एज सच. ठीक है? ऑडिटर ने ये सब प्रोसीजर्स किए हैं, बट नाउ कैरी 2020 क्या कहता है? यहाँ पर आकर आप रिपोर्ट कर दो, शेयर होल्डर्स को बता दो ये सब मैटर्स. ठीक है? सो क्विक रिवीजन ऑफ पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स. तो कैसे लर्न करना है? देखो 5 पॉइंट्स हैं. अब अगर आपने समरी बनाई है ना, एंड यू नो 5 पॉइंट्स आते हैं पीपीई में, बहुत क्विकली आपको याद आएंगे. क्या है? प्रॉपर रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी सिचुएशन ऑफ पीपीई एंड प्रॉपर रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू फुल पर्टिकुलर्स ऑफ आईए इंटेंजिबल एसेट्स. तो क्या लैंग्वेज है? वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हैज बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी. वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स हैव बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी. सिंपल है. Whether the PPE has been physically verified by management at reasonable intervals, and in case of any material discrepancy, whether the same has been properly dealt in with the books of accounts. अब देखो कुछ रटा थोड़ी ना मैंने, जो भी keywords हैं and connecting language तो मेरी ही है. ठीक है? Whether the title deeds with respect to the immovable property other than the lease taken on lease disclosed in the financial statement, whether the title deeds of such property are held in the name of the company, and if not, then auditor needs to give these details. ठीक है? Whether the company has revalued the PPE, the intangible assets, or both, and whether such revaluation is done by a registered valuer. Further, the auditor needs to specify the change if
it is more than equal to 10% change in the aggregate net carrying value of each class of PPE and intangible assets, and whether any proceeding has been initiated or pending against the company for Benami property under the Benami Transaction Prohibition Act 1988 and the rules made thereunder, and whether the same has been appropriately disclosed in the financial statement by the company. Simple है. अब मेरे माइंड में क्या है कि 5 points हैं with respect to PPE and intangible assets. Simple है ना? You can always get a question, a 3-mark question, कि with respect to PPE and intangible assets, what are the reporting requirements as per CARU 2020? अब इधर AS 10 या 26 ये सब मत लिखा. CARU 2020 की specific reporting requirements है. बताओ quickly clear है? Quickly send in your replies, then we'll start with second clause. ठीक है. So now the second clause is what? Inventory. अब inventory पे अगर आप देखोगे ना, almost same है जो आपका ऊपर PPE के लिए डिस्कस किया है. तो always read these points together. ठीक है. So physical verification देखना है ऑडिटर को, whether management ने reasonable intervals पे किया है या नहीं. ठीक है. And तो I told you जहां पर भी I mentioned plus मतलब and whether the management coverage and procedure is appropriate or not. तो जितना भी physical verification of inventory management कर रहा है, so whatever procedures the management personnel are following, whatever coverage, मतलब जितना भी inventory को इन्होंने physically verify किया, whether that is appropriate or not, and in case of any discrepancies, if the same need to be stated if it is more than equal to 10% in the aggregate for each class of inventory noticed. ठीक है. And if yes, whether the same has been properly dealt in with the books of account. Simple है, वहीं से आ रहा है. Further, now ये वाला point भी आपने chapter number 9 में किया है. बताओ किया? I think in borrowings वाला point. ठीक है. So it says that if at any point of time of the year the company has been sanctioned the working capital limit exceeding rupees 5 crores in aggregate from banks and financial institutions on the security of current assets. तो when you will do chapter number 12 ना, यहाँ वो ये वाला point वहां पर भी repeat होगा that अगर कोई sanctioned working capital limit है more than 5 crores on the security of current assets, your let's say trade receivables or your inventory, so the company needs to file what quarterly returns and to be filed with the bank and financial institution. So auditor will report whether such quarterly returns are in agreement with books of accounts and if not give details. ऐसा तो नहीं है कि books में तो 5 crore की inventory आ रही है, but जो क्वार्टरली रिटर्न्स बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ फाइल किया वहां पर 6 crores की आ रही है. सो इफ नॉट गिव द डिटेल्स. सिंपल है. तो इन्वेंट्री में देयर आर 2 points कि फिजिकल वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल्स पे है या नहीं, मैनेजमेंट की कवरेज एंड प्रोसीजर एप्रोप्रिएट है या नहीं, एंड अगर कोई डिस्क्रिपेंसी ऑफ मोर देन इक्वल टू 10% इन द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री नोटिस हुआ है, देन वेदर द सेम हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फर्दर, वेदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज बीन सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट एक्सीडिंग 5 crores फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन on security of current assets, and if yes, whether quarterly returns filed by the bank financial institution are in agreement with what the books of accounts, and if no, then the auditor has to give the details. देखो summary I have summarized it ना, और उसके बाद connecting languages mine, connecting words are mine, है ना. अब जो लॉ है कि सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट एक्सीडिंग 5 crores फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको थोड़ी ना हम चेंज कर सकते हैं. जो एक्सीडिंग 5 crores है वो तो एक्सीडिंग ही रहेगा ना, क्वार्टरली रिटर्न्स है वो तो क्वार्टरली रिटर्न्स ही रहेगा ना, सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स तो सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स ही रहेगा ना. तो इफ यू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इन हिंदी, सो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, और इन वट एवर लैंग्वेज, सो जैसे आप ऐसे बोलो कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को कोई सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट मोर देन 5 crores तो नहीं मिली थी फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, एंड इफ यस तो क्वार्टरली रिटर्न्स जो फाइल किए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के साथ, वेदर दे आर इन अग्रीमेंट विद, है ना. सो ट्राई टू यूज दिस लैंग्वेज, आई एम श्योर लर्निंग विल बिकम वेरी वेरी इजी. ठीक है.
So paragraph 3 में there are 21 clauses. We have done 2 clauses. One is relating to PPE and intangible assets consisting of 5 points, and the second is related to inventory consisting of 2 points. ठीक है? Clear? Now the third point. ठीक है? So I'll do one thing. Since the third point is bit lengthy, we can take a break of 10 minutes here, and after the break we will quickly finish all the clauses one by one, because 21 clauses and paragraph number 4 karna hai along with your queries. ठीक है? So students, before going for the break, quickly tell me कि जितना भी कैरो पड़ा है, paragraph 1 applicability, paragraph 2 कि कब से applicable है, consolidated पर applicable नहीं है, and paragraph 3 whereby we have discussed 2 clauses whether it is clear or not. ठीक है? So we take a quick break of 10 minutes here, and after the break we will restart from clause number 3. So IT, is the break done?
So students, I hope you all are back after the break. So Siddharth, Nilabjo, Meghna, Gehani, Hiral, Smita, all are saying it is correct. So shall we proceed further with clause number 3? So see, this clause, it pertains to the investments, guarantee, security, loans and advances in the nature of loans given by the company, whether secured or unsecured, to company, firms, LLP or any other party. मतलब किसी को भी लोन दिया है ना, इन्वेस्टमेंट किया है, गारंटी, सिक्योरिटी, सो सच अ वाइड सेक्शन कि कुछ भी लोन है, कुछ भी गारंटी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, टू एनी पार्टी, कंपनी, फर्म, एलएलपी. अगर ऐसा है तो ऑडिटर यू नीड टू रिपोर्ट, गिव एडिशनल रिपोर्टिंग ऑन 6 पॉइंट्स. ठीक है. सो एक्सटर्नल कंफर्मेशन और रिकैलकुलेशन वो सब तो करना ही है, वो तो ऑडिट प्रोसीजर्स अभी तक करते आए हैं ना. अब रिपोर्टिंग में कैरो की एडिशनल रिपोर्टिंग है. व्हाट आर दोस? दीज 6 पॉइंट्स. ठीक है. सो आई कैन राइट हियर व्हाट subsidiaries, joint venture, associates. So it says that if the company, the client है ना, जिसके ऊपर कैरो एप्लीकेबल है, कैरो रिपोर्टिंग, if it has given to subsidiary, joint ventures or associates. So basically group company, but the term used in order is what? Subsidiary, joint venture in associate. If yes, such loan or guarantee or any such kind of thing has been given, then what is the aggregate amount which has been given during year and the balance as on the balance sheet date. During the year कितना additional loan दिया and balance as on date कितना है. Same with respect to companies other than subsidiary, joint venture and associate, what is the aggregate amount and the balance as on the balance sheet date. तो ये auditor को specifically report करना है. Simple है पहला first point. Second point, whether the terms and conditions on which such loan, guarantee or anything, whatever is mentioned above is given, that is not prejudicial to the company's interest. Simple है, it is not harmful, it is in the interest of the company. जो भी rate of interest है, जो भी repayment है, everything. ठीक है. Third, simple है ना. Third point, whether the schedule of repayment of principal and the interest has been stipulated, मतलब specified है ना, stipulated, and whether the repayments or the receipts are regular or not. ऐसा तो नहीं हो रहा है that whatever loan you have given उससे repayment या interest payment आ ही नहीं रहा है. So whether the schedule of repayment of interest and principal is stipulated, it has been specified. ठीक है. And whether the repayments and receipts are regular or not. Simple. पहला क्या बोला कि एग्रीगेट अमाउंट क्या है और बैलेंस शीट डेट पे क्या है, किसको? सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट ए एंड बीज अदर देन द अबव मेंशन कंपनीज. टर्म्स एंड कंडीशंस प्रेजुडिशियल तो नहीं है. स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का स्टिपुलेटेड, स्पेसिफाई हो चुका है ना, डिसाइड हो चुका है ना. एंड वेदर द रिसीट्स एंड रीपेमेंट्स आर व्हाट? द रेगुलर और नॉट. सिंपल. इफ एनी ऑफ द अमाउंट जो रीपेमेंट्स है, रिसीट्स है, इट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days. ओवरड्यू मतलब क्या है कि ड्यू डेट पे नहीं हुआ है. सो एंड इफ इट इज ओवरड्यू फॉर व्हाट? 90 days. ड्यू डेट निकले हुए 90 days हो चुके हैं. देन वेदर रीजनेबल स्टेप्स फॉर रिकवरी हैज बीन टेकन और नॉट. वेदर रीजनेबल स्टेप्स फॉर रिकवरी हैज बीन टेकन और नॉट. ऐसा ना होना कि रिलेटेड, कि किसी भी रिलेटेड पार्टी को दिया हुआ है, आपने लोन दिया हुआ है, रिसीट, रीपेमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है. एंड कंपनी इज ऑल्सो नॉट टेकिंग रीजनेबल स्टेप्स. कोई मेल नहीं है. लेट्स से रीजनेबल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? कोई FIR तो नहीं फाइल कर दिया कंपनी ने उसके अगेंस्ट, बिकॉज दैट पार्टी इज नॉट रीपेइंग और नॉट गिविंग द इंटरेस्ट पेमेंट्स. सो रीजनेबल स्टेप्स होने चाहिए फॉर रिकवरी. ठीक है. इज इट क्लियर? 4 points. नाउ 5th point. सो इफ एनी ऑफ द loan or the repayment of principal or the interest amount, it has fallen due during the year, कि इस year में आपको repayment मिलना था, but instead of receiving the payment, instead of receiving such payment, what the company has done, the company has renewed, extended or given fresh loan to the same party. है ना, repayment scheduled था during the year,
बट वो रीपेमेंट रिसीव करने के बजाय व्हाट द कंपनी हैज डन, इट हैज रिन्यूड, एक्सटेंडेड, लेट्स से 2 इयर्स का रीपेमेंट 2 इयर्स यहाँ पर खत्म हो गया है, कंपनी ने उसको 5 इयर्स कर दिया, रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, फ्रेश लोन दे दिया टू द सेम पार्टीज टू सेटल द एग्जिस्टिंग लोन्स, कि एग्जिस्टिंग लोन के लिए एडिशनल पैसा दे दिया कि अब आप इससे पेमेंट कर दो एंड नाउ योर न्यू लोन विल स्टार्ट। अगर ऐसा है then the shareholders must know, the auditor needs to report to the shareholders what is the aggregate amount of such renewed, extended or fresh loan, and पहले तो क्या total amount है जो ऐसा additional loan दिया गया है, and what is the percentage of such aggregate amount to the total loans and advances, जो भी balance sheet में total loans and advances of the company आ रहा है उसका कितना percentage is such renewed, extended or fresh loan। शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए ना कि शेयर होल्डर्स का पैसा कहां पर यूज हो रहा है, ठीक है। सो आई रिपीट दिस पॉइंट दैट इफ एनी ऑफ द रीपेमेंट्स इज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर बट द कंपनी हैज रिन्यूड, एक्सटेंडेड और गिवन फ्रेश लोन टू सेटल द एग्जिस्टिंग लोन्स टू द सेम पार्टीज, उन्हीं पार्टी को दोबारा से लोन दे रहे हो एंड दे आर नॉट रीपेइंग योर लोन, टेल मी like what does it indicate? It indicates that something fishy is there ना, पैसा घुमाए जा रहे हैं, what is the reason? शेयर होल्डर का फंड्स है ना, तो शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा ना, क्या बताना पड़ेगा? what is the aggregate amount of such renewed, extended and fresh loan and the percentage of such aggregate amount of renewed, extended or fresh loan to the total loans and advances। clear है? So this was the 5th point. And what is the last point? If any loan or advance in the nature of loan is repayable on demand without specifying terms or period, देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया था with respect to point number 3, क्या बोला था कि जो repayment है ना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये स्टिपुलेटेड, स्पेसिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। और 6 पॉइंट में क्या बोला है, इसका ऑपोजिट, ऐसा तो नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू एनी लोन एंड एडवांस कोई टर्म्स एंड द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट लाइक द इंटरेस्ट अमाउंट, द पीरियड ऑफ रीपेमेंट, इट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड, इट इज रीपेबल ऑन डिमांड, कि जब भी हम मंगवाएंगे तब दे देना, अभी वी हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग, ऐसा तो नहीं है दैट एनी लोन एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन इज रीपेबल ऑन डिमांड, ठीक है, विदाउट स्पेसिफाइंग टर्म्स एंड पीरियड्स। तो पॉइंट नंबर 3 का है ना, उसका ऑपोजिट ही है काइंड ऑफ, ठीक है। इफ यस देन अगेन द एग्रीगेट अमाउंट एंड द परसेंटेज टू टोटल लोन एंड व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ amount of loans given to promoters and related party। related party कहाँ डिफाइन की गई है? clause 76 of section 2 of the Companies Act, ठीक है। सो देखो बेसिकली क्या है, अब इसको कैसे लर्न करना है, देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर से अपना पैसा दिया हुआ है कंपनी को, है ना। नाउ अगर कंपनी ने उस पैसे को, whether company has made any investment, guarantee, security या given loans and advances in the nature of loan, whether secured or unsecured to any company, firm, LLP या any other party, तो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए ना एक एक चीज, कि वो पैसा क्यों, किसको दिया है, कितने टाइम के लिए दिया है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट सेज दैट व्हाट इज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ दैट given during that year along with the balance as on the balance sheet date with respect to subsidiary, joint venture, associate and other companies is the second point, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस प्रेजुडिशियल तो नहीं है। schedule of repayment of principal and interest stipulated, मतलब स्पेसिफाई हो चुका है, और जो भी स्पेसिफाई हुआ है repayment and receipt रेगुलर है। और 6th पॉइंट उसका ऑपोजिट है, वो क्या बोलता है, ऐसा कोई लोन तो नहीं है जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है, जहां पर आपने स्पेसिफाइंग टर्म्स नहीं किए हैं, विदाउट स्पेसिफाइंग टर्म्स एंड पीरियड, तो वहां पर क्या बताना है, एग्रीगेट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स, ठीक है, एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन स्पेसिफिकली गिवन टू प्रमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टी, ठीक है। 4th and 5th पॉइंट में क्या बोलता है, इफ एनी ऑफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज के लिए, तो रीजनेबल स्टेप्स लोगे ना, ठीक है। सो वेदर रीजनेबल स्टेप्स फॉर रिकवरी हैज बीन टेकन और नॉट, ठीक है। एंड इफ एनी ऑफ द रीपेमेंट्स हैव फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग दैट रीपेमेंट, कंपनी हैज रिन्यूड, एक्सटेंडेड और गिवन फ्रेश लोन टू सेटल द एग्जिस्टिंग लोन्स टू द सेम पार्टीज, देखो एवरीथिंग इज फिशी हियर ना इस सिचुएशन में, तो देन व्हाट इज द एग्रीगेट अमाउंट रिन्यूड, एक्सटेंडेड या फ्रेश लोन, and what is the percentage of such amount to the total loans and advances, and this is not applicable to a company जिसका principal business ही is to give loan, ठीक है, clear।
इज इट क्लियर, है ना? तो बताओ अब पॉइंट नंबर, क्लॉज नंबर 3, इज इट क्लियर? इट इज अ वेरी वाइड सेक्शन, कोई भी पैसा किसी भी फॉर्म में किसी को भी दिया है. Is it clear? So we have done clause number 1, 2 and 3. So students, quickly send in your replies, and Vijay God, thank you. Quickly send in your replies. So this was clause number 3. So students are saying, ma'am, it is clear. Okay. Now with respect to clause number 4 of CARO 2020, it says that whether the requirements of section 185 and 186 have been met. तो देखो, let us have a look at the module. Module में कैसे बोला है? Point number, clause number 4. In respect of loans, investments, guarantees, securities, whether provision of section 185 and 186 of the Companies Act have been complied with or not, provide the details thereof. किया है या नहीं उसका डिटेल्स दो. क्या कोई भी लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी या सिक्योरिटी दिया है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 185 एंड 186. ठीक है. सो देखो क्लॉज 3, इट वाज अ वेरी वाइड सेक्शन. तो इट सेड टू एनी पार्टी, यहां पर था ना, एनी अदर पार्टी, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, किसी को भी दिया. तो इट वाज अ वेरी वाइड क्लॉज. अब क्लॉज नंबर 4 में स्पेसिफिकली किसका रिक्वायरमेंट पूछा है? सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट. ठीक है. सो स्टूडेंट, सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेट्स टू लोन टू डायरेक्टर्स. ठीक है. एंड 186 इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी. ठीक है. सो with respect to loan to directors, there are various conditions like special resolution is required, है ना, and what is the purpose, why it has been given, है ना. So all those, whether those provisions have been complied with or not, the auditor needs to give the detail. तो clause number 3 में और 4 में difference समझ आया? This is specifically for section 185 and 186 of the Companies Act. And I've told you that section 185 deals with what? Loans to directors. And 186 is with respect to loans and investments by the company. है ना? So, ठीक है. So, with respect to this, there is a specific reporting requirement under clause 4 of the paragraph 3 of CARO 2020. So Charu is saying, ma'am, it is clear, but question कैसे आएंगे? So students, like you may get a question that so and so is the company and CARO is applicable. So what are the reporting requirements with respect to PPE and intangible asset, and under which clause the auditor needs to give the additional reporting? So you will mention under clause 1 of paragraph 3 of CARO 2020, the auditor needs to give reporting with respect to the 5 points that we have discussed. ठीक है Charu, is it clear? ठीक है. Now clause 5. So with respect to the deposits, the public deposits and the deemed deposits, what is the auditor required to report? ठीक है. So when a company accepts public deposit, so RBI directives needs to be complied with. Further, provisions of, there is chapter 5th to the Companies Act consisting of provisions of section 73 to 76 and 76A. So whether such provisions and rules, other rules have been complied with or not, and if not, what is the nature of contravention. तो ऑडिटर को क्या देखना होगा? अच्छा, ये कंपनी है, इस पे कैरो एप्लीकेबल है. ठीक है. Then auditor, while conducting the audit, he finds that public deposit during the year accept किया गया था. So auditor will see whether RBI directives have been complied with or not, whether provisions of section 73 to 76 and 76A and other provisions and rules have been complied with or not, and if not, auditor will give an additional reporting with respect to such deposit, deemed deposits here. Further, if any of the any of the order of Company Law Board, National Company Law Tribunal, RBI, Reserve Bank of India, any court or tribunal has been given, then whether the same has been complied with or not. ठीक है. सो अब ऑडिटर को एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गया ना कि पब्लिक डिपॉजिट्स है, तो जो अपना ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, तो आरबीआई डायरेक्टिव्स भी चेक करेंगे, प्रोविजन
ऑफ सेक्शन 73 टू 76 भी करेंगे। फिर कंपनी को बोलेंगे कोई ऑर्डर है कि सीएलबी का, एनसीएलटी का, आरबीआई का, एनी कोर्ट या एनी अदर ट्रिब्यूनल, और उसकी कंडीशंस, उसके जो भी डायरेक्शंस है, वेदर यू हैव कंप्लाइड विद और नॉट, एंड बेस्ड ऑन ऑल दैट द additional reporting is required specific to all these matters which are mentioned in clause number 5. Clear? So Charu, you may get a question that with this is the company to which CARE 2020 is applicable, and during the course of audit, the engagement partner saw that the company has accepted public deposits. So what are the reporting requirements under CARE 2020? So these are the reporting requirements. अब देखो इसको कैसे learn करना है. RBI directives, Section 73 to 76 and other provisions and rules comply किए हैं नहीं, and if not, the nature of contravention. Then if order of CLB, NCLT, RBI, any other court or tribunal is received, whether the same has been complied with or not. Simple है ना? ठीक है? So this was clause 5. Simple. Clause number 6. Whether the company has maintained cost records as specified by CG under section 148 subsection 1, whether such cost records have been maintained or not. So let us just have a look at how is it mentioned in the CARE order. So 6th clause, whether maintenance of cost records has been specified by central government under subsection 1 of section 148 of the Companies Act, and whether such accounts and records have been so made and maintained. So in the next session we will be doing students cost audit under section 148. तो वहां पर आप देखोगे that with respect to certain classes of company, they are as CG has specified, they are required to maintain the cost records. ठीक है? So this point here just gives the responsibility on the auditor to mention here whether such records have been maintained or not. ठीक है? Whether such records have been maintained or not. Simple है clause 6. ठीक है? Now with respect to statutory dues, and I told you that such statutory dues may be in the form of GST or maybe employees dues related to employees compensation like PF, ESI, customs or income tax. Like these are what related to government and these are what related to employees. ठीक है? Now this clause under clause 7 with respect to statutory dues, there is the statutory dues have been bifurcated into two parts. First is what undisputed dues and disputed. ठीक है? So let us first discuss disputed. So let's say with respect to income tax or GST, so according to the company, they need to pay the tax amounting to, let's say, rupees 2 crores. But income tax authorities ke according, the company is required to pay a tax of rupees 2.5 crores. Now, this is a dispute, na? It might be pending before the CIT appeals or the ITAT, है ना? So if it is disputed और वो pay नहीं हुआ है, तो then we totally understand. We just need to mention here, report here, what is the amount involved and the forum before which such dispute is pending. है ना? तो उसके लिए ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिटर में आस्क फॉर द जो भी असेसमेंट ऑडिट आया है या जो भी अपील फाइल किया है, एनी सच पेपर्स, सो व्हाट इज द फोरम बिफोर व्हिच सच dispute is pending and what is the amount involved, because disputed है but ऑफिस है कि आपने कुछ कम पे किया होगा या नहीं पे किया होगा. Clear? Now with respect to undisputed, अब undisputed है फिर भी पे नहीं किया statutory dues, so auditor will see whether the company is regular or not in paying statutory dues which are undisputed, because undisputed है तो वहां तो कोई dispute है ही नहीं ना. आप भी कह रहे हो 1 crore पे करना है, इनकम टैक्स अथॉरिटी भी कह रही हो 1 crore पे करना है. So whether it is regular or not, and if not, then what is the auditor need to report here? What is the extent of arrears as on the last date of the financial year for a period of more than 6 months? मतलब जो 31st मार्च को जिसको ओवर ड्यू हुए 6 months हो गए, सो बेसिकली आई कैन से 1 अक्टूबर से पहले वाले जो हैं उनको 31st मार्च को ओवर ड्यू हुए 6 months हो जाएंगे ना, from the date when they became payable. So let us read it again. If not, the extent of arrears outstanding as on the last date of financial year for a period of more than 6 months from the date when they became payable. So auditor needs to mention all such statutory dues which are though undisputed, but they are outstanding for more than 6 months as on the balance sheet date from their due date.
ठीक है, इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 7, क्लॉज नंबर 7. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्लॉज नंबर 8. You all have done this in your chapter number 9. So now the auditor needs to report that if any of the transactions which was not earlier recorded in the books of accounts by the company and has now been surrendered or disclosed under the Income Tax Act, if such is a situation, then whether the same has been properly recorded in the books of accounts. ऐसा तो नहीं है that books of accounts में कोई income disclose नहीं की थी and under the Income Tax Act the same has been surrendered or disclosed by the company. So now auditor will see whether the same has been properly recorded. ऐसा तो नहीं है कि Income Tax Act में तो disclose कर दी but books of accounts में उसको add on ही नहीं किया. ठीक है, so auditor will consider that, and this clause number 9 you all have done, sorry, clause number 8 you all have done in chapter number 9. ठीक है, so for all those who are saying मैम कैसे लिखना होगा, तो देखो language बहुत simple है. Whether any transaction not recorded in books of accounts have been surrendered, disclosed as income during the year in tax assessments under Income Tax Act. If so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts during the year. Clear? So we have done clause number, we have covered till clause number 8 here. Okay? Clear? Is it clear? So let us just quickly have a look what all we have done so far. So we started with clause number 1, which pertains to 5 reporting points with respect to PPE and intangible assets. Then 2 points with respect to inventories, clause number 2. Clause number 3 consists of what? Any loan, investment, guarantee, security, loans, advances, secured, unsecured to company, firm, LLP, any other party. 6 reporting points are there. With respect to section 185, 186, comply हुआ है या नहीं, if not the details. Clause number 5, public deposits है, तो RBI directives, provision of 73, 76, provisions, rules, comply हुआ है नहीं, nature of contravention, कोई order है इन सब का, तो whether complied or not. Cost records जो 148 subsection 1 में prescribed हैं by CG, whether maintained or not. Statutory dues, disputed, undisputed, and transactions which are not recorded in books of accounts now, whether the same has been surrendered or disclosed under Income Tax Act. If so, whether the same has been properly recorded in the books of accounts. So बताओ, quickly send in your replies. Clause number 8 तक clear है? कोई doubt है? Yes, Prabhas, you are clear. You are right. See, students, if you try to learn the clause numbers, na, it won't be very tough. है ना? तो एक बारी start तो करो. Obviously, writing incorrect number is not advisable. फिर तो आप मत, you just mentioned relevant clause in paragraph 3 of CARE 2020. But if you are able to remember, जैसे first आपको पता ही है PP intangible asset है, second inventory है ना? अगर ऐसे कुछ आपको you are sure and in fact try to learn ना, एक sequence learn होगा. देखो, I always tell you कि जो summary होती है ना, it helps you a lot. है ना? You may make it in your own language, in your own the way you like. है ना? But एक ये bird's eye view देता है और examination point of view में आपको याद आ जाता है कि अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ था. ठीक है? So Hiral, is your doubt clear? तो clause 7 में क्या doubt है? So whose doubt is this? Smita, देखो यहाँ पर auditor को reporting. So students, we are discussing clause 6 again quickly. So statutory dues. Statutory मतलब any dues which are payable under any law, under any statute. It may be payable to government like GST, income tax, custom. It may be payable on behalf of what? For the employees like PF, ESI, है ना? So auditor needs to report कि ऐसे कोई statutory dues हैं. Then undisputed and disputed में separate reporting है. अगर disputed है, तो what is the amount involved and what is the forum before which it is pending? Let's say income tax है, तो CIT appeals में pending है, IT-80 में pending है, कहाँ pending? Undisputed है. So whether the company is regular in paying that or not, regular होना चाहिए ना, because undisputed है. But in case if it is not, ठीक है, देन जो 31 मार्च को लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को अगर कोई भी ड्यू है जो ओवर ड्यू फॉर मोर देन 6 months हो चुका है, द ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट दैट. ठीक है? क्लियर? Whose doubt was it? Smita, is it clear?
ठीक है. Now let us move on to clause number 9. So clause number 3 में what we have discussed, any of the loans made by the company, guarantee given by the company, है ना. A clause number 9 is what, loan taken by the company. Company ने अगर कोई loan लिया है, then what are the reporting requirements? So repayment of dues देखना है, ठीक है. So the auditor will first see whether the company has defaulted in repayment of loan or interest, and if yes, what is the period and amount of default, and such information is to be given in this format. That nature of borrowing का क्या था, name of the lender, lender wise detail देना है, amount not paid on due date, whether principal or interest, number of days and remarks. Chapter number 9 में ये सब किया है ना, ठीक है. Then whether company has been declared as a willful defaulter by bank, financial institution or other. Anyone remember this point? Again, chapter number 9 में borrowings में you have done all these notes. Who is a willful defaulter? So any person, any entity that has not paid the loan back to the bank or financial institution despite of the ability to repay it. Mr. Vijay Mallya was declared willful defaulter, है ना. तो despite of the ability to repay it, आपने पे नहीं किया, willfully you have defaulted, है ना. So whether the company has been declared, if you remember notes में there was a specific disclosure requirement on the management कि whether the company has been declared, management को mention करना है whether the company has been declared as willful defaulter. अब management ने disclose कर दिया, auditor check करके shareholders को बताएगा कि हाँ भाई नहीं हुआ declare या हुआ declare, ठीक है. Point number 3, in case of term loan, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है, देखो wherever you will see ना in Caro 2020, जहां पर भी कंपनी ने पैसा लिया ना, तो वहां एक one of the points will be related to purpose, ठीक है. Why? देखो, if the company has taken any money from, let's say in the form of this loan, or let's say in the form of IPO, FPO, private placement, anything, है ना, तो वो उस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए. अदरवाइज देयर कैन बी स्मेल ऑफ व्हाट, फ्रॉड, कि आपने लोन तो ले लिया बट उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, ठीक है. सो टर्म लोन्स है, तो व्हाट इज द पर्पस फॉर विच लोन हैज बीन ऑब्टेन्ड, एंड इफ इट इज नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस, देन अमाउंट एंड द अदर पर्पस फॉर विच इट हैज बीन यूज्ड, ठीक है. सो लेट्स से आपने टर्म लोन लिया था फॉर लेट्स से परचेज ऑफ सम मशीनरी, ठीक है, बट यू हैव यूज्ड इट फॉर सम अदर पर्पस, सो व्हाट इज दैट पर्पस, ठीक है. Next point is also related to this only. If any short-term loan has been utilized from long-term, if yes, what is the amount and nature? देखो, आपने let's say you took a loan for the company took a loan for 3 years, ठीक है, तो उसका repayment तो 3 years के बाद start हो जाएगा. But you have used such loan for a long-term project जो मे बी 15 years के बाद आपको रीपे करना स्टार्ट करेगा, बट इसको तो आपको रीपे 3 years के बाद करना पड़ेगा. यहाँ से इनकम तो 15 years के बाद आएगी ना, तो ऐसा नहीं करना है ना. सो दैट इज व्हाई एनी शॉर्ट टर्म लोन, इफ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म, व्हाट इज द नेचर एंड द अमाउंट, ठीक है. सिंपल है. नाउ वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स फ्रॉम एनी एंटिटी to meet the obligation of subsidiary, joint venture and associate, if yes, the auditor needs to mention the details, nature and amount. अगर कंपनी ने कोई भी लोन लिया है to meet the obligation of subsidiary, joint venture या associate, subsidiary को किसी का पैसा देना है, इसलिए होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया है. So what is the detail, all the details, the nature and the amount is to be mentioned, ठीक है. And the next point also relates to subsidiary, joint venture and associates, where it says that if the company has raised any loans on pledge of security and such security is held in subsidiary, joint venture and associate, if so, the details, and the auditor needs to report the default in repayment. देखो सिंपल है, पर यस थोड़ा बहुत लर्निंग तो रिक्वायर्ड है, नहीं तो आपको लर्निंग करोगे पता थोड़ी ना चलेगा दैट लास्ट 2 points आर रिलेटेड टू सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स. सो क्विक लुक एट क्लॉज नंबर 9 अगेन. सो देयर आर 6 points, है ना. रीपेमेंट ऑफ ड्यूज 6 points, ठीक है. सो लोन टेकन बाय द कंपनी, तो सबसे पहले तो कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, एंड इफ यस, then what is the period, amount of default and the format is to be given in the format which is given in your module Caro 2020, ठीक है. Whether the company has been declared as willful defaulter either by the bank, financial institution or other. Whether the term loans
for which the purpose for which they have been obtained, whether they are utilized for that purpose, and if no, then what is the amount of such term loan which has been utilized from some other purpose and what is that purpose. Same way short term को long term के लिए तो नहीं use कर दिया, अगर कर दिया तो what is the nature and amount. And the next 2 points relate to joint venture subsidiary associate की कंपनी ने कोई फंड तो नहीं रेज किया फ्रॉम एनी पर्सन टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट. इफ यस, द डिटेल्स, नेचर एंड अमाउंट. सेम वे वेदर द रेज्ड लोन, if company has raised a loan on the pledge of securities held in subsidiary joint venture associate, if so, the details and the auditor needs to report default in repayment. Clear? ठीक है. Yes, tabular form में information देना पड़ेगा आपको. ये टेबल ड्रॉ करने में कितना टाइम लगेगा, है ना. तो टेबुलर फॉर्म में ही इट इज रिक्वायर्ड. एक फॉर्मेट दिया है ना शेड्यूल 3 में, तो आप यही फॉर्मेट तो बताओगे ना. ठीक है. तो दिस वाज क्लॉज नंबर 9. ठीक है. अब देखो ये यहाँ पर क्या था, एनी लोन टेकन बाय द कंपनी. अब यहाँ क्या आ गया, एनी मनी रेज बाय वे ऑफ आईपीओ और एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, further public offer during the year including debt instruments. And clause 10 की ही यहाँ पर 2 points हैं. B point relates to what? Your preferential allotment or private placement, जहाँ section 42, section 62 apply होता. ठीक है. So देखो, I told you purpose वाली बात दोनों में आएगी, हर जगह आएगी. जहां पर भी कंपनी ने लोन लिया है ना, वहां पैसा उठाया है मार्केट से या कहीं से भी, so purpose वाली बात तो आएगी, बिकॉज पर्पस गलत है. आपने लिया तो किसी और चीज के लिए था, यूज उसको किसी और काम के लिए कर रहे हो, तो फ्रॉड इंटेंशंस हो सकते हैं ना. ठीक है. सो विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज 10, पॉइंट नंबर ए, whether the money company has raised money by way of IPO or FPO during the year including the debt instruments, and if yes, whether the same has been applied for the purpose for which it has been raised, and if not, the details and the delays and defaults. Simple है, सेम आ रहा है ऊपर से. सेम वे यहाँ पर प्लस सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, बाद में कंपनी ने वो ठीक कर दिया या नहीं. ठीक है. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट है ना, जहां पर यू आर नॉट ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक बट रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को प्राइवेटली, है ना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दे रहे हो आप. सो whether the company has complied with requirements of section 42 and 62. तो 42 किसके लिए होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, एंड 62 किसके लिए होता है, राइट इशू इसॉप के लिए, है ना. जहां पर आप किसकी बात कर रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट इज सेक्शन 42 एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बाय वे ऑफ इसॉप और बाय वे ऑफ राइट इशू, है ना. सो वेदर द सेम हैज बीन कंप्लाइड विद, पर्पस है, इफ नॉट, डिटेल एंड द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस. सिंपल. सो दिस वाज व्हाट, क्लॉज 10. Clause 10 consisting of 2 clauses. ठीक है. Now with respect to 11, see I told you कि अगर पैसा यूज नहीं कर रहे हो आप, जिस पर्पस के लिए लिया है, तो फ्रॉड इंटेंशंस हो सकते हैं ना. So clause number 11 now relates to what, fraud. And today when we were doing section 143 subsection 12, 13, 14, 15, वहां पर लास्ट में लिखा था ना, in clause 11 of CARO 2020 fraud reporting ID. ठीक है. Now try to understand in this there are 3 points. देखो, एक तो क्या बोलता है, I am discussing clause number this B point here. Section 143 subsection 12 में whatever reporting was required to be made to central government in form ADT 4, whether the same has been done or not, है ना. तो यहाँ पर तो क्या बोला है, अगर कोई फ्रॉड था 143 सबसेक्शन 12 में, एंड इफ यू रिमेंबर 1 करोड़ से एक्सीड करता है तो ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है ना. तो वेदर सच रिपोर्टिंग हैज बीन डन और नॉट, ADT 4 फाइल किया है नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये हम शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं कि शेयर होल्डर्स सुनो, द कंपनी हैज फाइल्ड ADT 4 और द कंपनी हैज नॉट फाइल्ड ADT 4. क्लियर. सो दिस इज पॉइंट नंबर बी. ठीक है. पॉइंट नंबर ए क्या बोलता है, इफ एनी फ्रॉड, मतलब एनी फ्रॉड, कोई भी अमाउंट हो, 10 like 1 lakh, 10 lakhs, एनी अमाउंट फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना. व्हाट इज द नेचर एंड अमाउंट. तो यहाँ पर सीजी वाली बात नहीं आ रही है. यू में आज कि मैम ये दोनों अलग अलग क्यों हैं. देखो, यहाँ पर तो हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि 143 सबसेक्शन 12 में अगर कुछ फ्रॉड रिपोर्टिंग सीजी को करनी थी तो वो की है या नहीं. ठीक है. क्लॉज नंबर ए में हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई फ्रॉड कंपनी पर हुआ है या कंपनी ने किया है और ऐसा नोटिस या रिपोर्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इज द नेचर एंड अमाउंट.
Clear? And clause C says that in case of any whistleblower complaints have been received by the company during the year, whether auditor has considered the implications of such whistleblower complaints. So what is whistleblower complaints? Basically, see if any individual any person internal to the organization who reveals private information about the organization and usually related to something which is not done in a correct way in the company, reporting about what the wrongdoing which is happening in the company, है ना? तो कुछ लोग चुपके से बता देते हैं, है ना? And their identity is kept anonymous, है ना? उन्होंने रिपोर्ट किया किसी को कि ऐसा ऐसा कुछ कंपनी में गलत हो रहा है, उनका आइडेंटिटी एनोनिमस रहेगा, किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे. Why? Because there may be threat to their life and job, है ना? That they have reported it. Okay? So that is called what? Whistleblower complaints. Now, if any whistleblower complaints have been received by the company during the year, now there is a reporting requirement on the auditor. That auditor, you need to consider it and tell the users, the shareholders, that देखो मैंने उसको consider भी कर लिया. ठीक है? So with respect to clause 11, there are 3 points. A, B, C. First is related to any fraud by the company on the company जो नोटिस या रिपोर्ट हुआ है, नेचर एंड अमाउंट. 143 सबसेक्शन 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कर दिया है नहीं, इफ इट वाज रिक्वायर्ड. एंड जो भी विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स है रिसीव्ड बाय द कंपनी, वेदर ऑडिटर हैज कंसीडर्ड इट और नॉट. क्लियर? सो दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज नंबर 11. नाउ क्लॉज नंबर 12 इज व्हाट? निधि कंपनी. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू विल सी ना, मैंने निधि कंपनी को और एनबीएफसी को ना समरी में थोड़ा डिफरेंट कलर में लिखा था. लेट अस हैव अ लुक. So निधि कंपनी एंड एनबीएफसी, है ना? ये लाइट ब्लू कलर से लिखा था. अच्छा चलो अब हट गया अब. ठीक है, ये देखो यहां पर इसको थोड़ा डिफरेंट कलर में लिखा था, है ना? ये है ना. वाई? देखो ये वाले जो क्लॉजेज हैं, क्लॉज नंबर 12 एंड 16 विद रिस्पेक्ट टू निधि कंपनी एंड एनबीएफसी, दीज आर एप्लीकेबल टू ओनली द निधि कंपनी. जो क्लॉज नंबर 12 है वो निधि कंपनी को ही एप्लीकेबल होगा ना. ऐसी एनबीएफसी को ही एप्लीकेबल होगा ना. सो दीज आर व्हाट? कंपनी स्पेसिफिक, है ना? जो निधि कंपनी के क्लॉज में फॉल करता है एज पर सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसी केस में ये वाला क्लॉज विल बी एप्लीकेबल. सिंपल है, लॉजिकल है. सो नाउ क्लॉज नंबर 12 with respect to Nidhi company. So what are Nidhi company? So who was sending me replies? I just forgot. ठीक है? So see students, Nidhi company, these are formed under section 406 of the Companies Act, and these are basically the chit fund companies normally registered in the form of the company to mobilize the saving of the members. जैसे किटी पार्टीज होता है ना, वो तो अनऑर्गेनाइज्ड वे में है ना. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, जहां पर प्रॉपर सेक्शन है, जहां पे एज अ कंपनी रजिस्टर होती है कंपनी, दैट एज अ निधि कंपनी इट इज बीन रजिस्टर्ड टू मोबिलाइज द सेविंग फ्रॉम द मेंबर्स. सो सोनू केशरी, इज इट क्लियर द नीड ऑफ निधि कंपनी सो एज टू inculcate the habit of savings among the members, है ना? Now, there are 3 conditions that 3 points the auditor needs to see. So first, the auditor will report, और ये किस केस में आएगा? सिर्फ निधि कंपनी में. अगर निधि कंपनी नहीं है तो this clause will not come. So whether the company has complied with the ratio of net owned funds to deposit of 1:20. So देखो, the company must be having its net owned funds. और ये कंपनी क्या करती है? इट टेक्स डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, और जब किसी को जरूरत होगी इट विल लेंड द फंड्स टू द पर्सन, टू द मेंबर हु नीड्स सच फंड्स. ठीक है? सो नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट मतलब इफ द कंपनी इज हैविंग 1 rupee ऑफ इट्स ओन, देन मैक्सिमम 20 rupees डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द मेंबर्स, है ना? So whether the company has complied with the ratio of net owned funds to deposits of 1:20, कि अगर 1 rupee कंपनी के पास है तो maximum 20 rupees can be accepted from the members as deposits. Clear? Point number B. See, when the company is accepting the deposits ना, it might happen that देखो members ने let's say कुछ deposit दिया कंपनी में, in return of that it might be possible कि कंपनी अपना कुछ mortgage कर रही है to the members,
ठीक है. सो इट सेज, तो जब मॉर्टगेज करती है कंपनी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनकम्बर्ड, है ना. डिपॉजिट आया, उसके लिए कुछ कंपनी ने मॉर्टगेज किया. बट हियर व्हाट इज द टर्म, अनएनकम्बर्ड. दैट मीन्स दैट जो भी डिपॉजिट्स कंपनी में आ रहे हैं, एटलीस्ट डिपॉजिट कहाँ से आते हैं, मेंबर से. क्यों आते हैं, सो दैट जब भी उनको जरूरत होगी दे कैन गेट द फंड्स फ्रॉम द कंपनी. ठीक है. सो एटलीस्ट 10% ऑफ द अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट शुड बी देयर. मतलब जितना भी डिपॉजिट्स है उसका 10% शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डेट. ठीक है. अनएनकम्बर्ड 10% ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कोई भी सिक्योरिटी कंपनी ने नहीं दी है. ठीक है. एंड लास्ट द सी क्लॉज सेज वेदर देयर इज एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट, एंड इफ सो व्हाट आर द डिटेल्स. तो सिंपल पॉइंट है, निधि कंपनी स्पेसिफिक है, दैट वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद नेट ऑफ फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो 1:20, कि कंपनी के पास 1 रुपी है तो मैक्सिमम 20 रुपीज का डिपॉजिट ले सकते हैं. ठीक है. एंड जो डिपॉजिट है, ठीक है, as per the Nidhi rules 2014, the term deposits they should be at least 10% unencumbered, free from any debt. ठीक है. And whether any default has been paid with respect is there by the company with respect to payment of interest or repayment, and if so the details. Simple है ना. ठीक है. So this was clause 10. Clause 13 very simple, related party transactions. So ऑडिटर को क्या देखना है, that whether the company has complied with section 177, की ऑडिट कमिटी का अप्रूवल लिया है नहीं with respect to related party transaction. section 188 जहां पर बताया जाता है कि कब आपको अप्रूवल चाहिए मेंबर्स का. ठीक है. बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, एंड डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या AS18, है ना. तो वेदर ऑल दीज हैव बीन कंप्लाइड विद और नॉट. तो ऑडिटर ने जो प्रोसीजर्स किए अभी तक रिलेटेड पार्टी के लिए, SA 550 भी फॉलो किया, है ना. यहाँ पर ये नहीं बताना है कि SA 550 के अकॉर्डिंग सब ठीक है, नहीं. यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या बताना है, सेक्शन 177 कंप्लाई हुआ नहीं, सेक्शन 188 कंप्लाई हुआ नहीं, एंड द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई हुआ नहीं. सिंपल है. अब बताओ क्यों नहीं याद होगा, रिलेटेड पार्टी पता है 177, 188 AS. ठीक है. क्लॉज नंबर 14. सो देयर आर 2 पॉइंट्स. वी हैव डन इंटरनल ऑडिट इन चैप्टर नंबर 4, है ना. तो यहां पर सिंपल ऑडिटर को क्या बताना है, दैट द इंटरनल ऑडिट सिस्टम इन द कंपनी वेदर इट इज कमेंसुरेट, मतलब एडिक्वेट टू द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. ऐसा तो नहीं है कि रिलायंस ग्रुप है और इंटरनल ऑडिटर जो है एक प्रोप्राइटर है या एक इंडिविजुअल पर्सन है. ठीक है. सो कमेंसुरेट, एडिक्वेट विद द साइज एंड नेचर है नहीं, एंड वेदर द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर हैज बीन कंसीडर्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर. तो देखो सेक्शन कहां पर बताया गया इंटरनल ऑडिट का, बताओ क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज. किसी को याद है? क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज. सेक्शन बताओ, फिर पता चलेगा आपने चैप्टर नंबर 4 अच्छे से किया था या नहीं. क्विकली सेंड इन योर रिप्लाई, आज खत्म करना है ये. एब्सोल्युटली करेक्ट प्रभास, सेक्शन 138, है ना. तो देखो जहां पर ऑडिटर को स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि भाई आपको रिपोर्ट करना ही है, शेयर होल्डर्स को बताना है कि आपने रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर को कंसीडर किया है या नहीं, तो ऑडिटर कंसीडर पक्का से करेगा और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट करेगा ना, है ना. सो additional reporting requirement by CARE 2020 on various matters, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर ऑडिटर को ऐसा करना ही चाहिए, तो वहां पर क्या है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ जाती है कंपनी के ऊपर. ठीक है. सो इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसुरेट, एडिक्वेट है नहीं साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस से, एंड वेदर रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर हैव बीन कंसीडर्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर. सो हीरल चेक योर आंसर, नीलाब्जो, प्रभास यू आर करेक्ट. ठीक है. Clause number 15. So how is it mentioned? Let me just show it to you. So clause number 15 देखो, whether the company has entered into any non-cash transaction with directors, persons connected with him, and if so, whether the provisions of section 192 of the Companies Act have been complied with or not. So basically section 192 says that members approval will be required along with other compliances. So it basically says that when there is any non-cash transaction, let's say the directors have been given shares and in return they have not paid cash, they might have paid given their car
or any such non-cash transaction has happened with the director or any other persons connected with them, and if so, then provisions of section 192, whether these have been complied with or not. As simple as that. ठीक है. So non-cash transaction है किसके साथ? Directors के साथ, persons with connected with him के साथ. If so, section 192. Simple. Now clause 16, and this is what related to what? NBFC. ठीक है. So with respect to non-banking financial company only, this clause is applicable. ठीक है. Hiral is saying section 138. ठीक है. Now NBFC, ठीक है. बहुत सिंपल है. देखो NBFC को if they have to conduct the activities as NBFC, so first of all they need to be registered under section 45 IA of RBI Act. So whether such registration has been obtained or not. If the NBFC is required to be registered under section 45 IA of the RBI Act, if so, whether such have been obtained or not. Simple. ठीक है. Second, it says whether any activity has been conducted by the NBFC without holding valid certificate. ऐसा तो नहीं है without holding a valid certificate activity कर दी है. ठीक है. Clear? ये दोनों point clear है. So first point says whether the company is required to get registered under section 45 IA of the RBI Act, and if so, whether the registration has been obtained. Second point says whether the company has conducted any NBFC or national banking housing finance activity without a valid certificate of registration from RBI. Simple है. ठीक है. Now C and D, जैसे फर्स्ट और सेकंड कनेक्टेड है ना कि रजिस्ट्रेशन लिया या नहीं. सेकंड वन में क्या कहता है? कोई एक्टिविटी विदाउट रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर दिया. सिंपल. C and D आर कनेक्टेड. ठीक है. ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्टिविटी के लिए, एंड ये वाला किससे कनेक्टेड है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी. वन ऑफ सच टाइप इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. ठीक है. जो बेसिकली इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. शेयर्स में. ठीक है. सो to be called a CIC, core investment company, the NBFC needs to fulfill certain criteria. So whether that criteria has been fulfilled or not. So what is the language? Whether the company is a core investment company as defined in the regulation made by RBI, and if so, whether it continues to fulfill the criteria of CIC. ठीक है. And the next point says कि अगर NBFC का कोई ग्रुप है, ठीक है, and there are more than one CICs. For example, इस ग्रुप में there are 5 companies. ठीक है. And out of these 5, 3 are CIC or 2 are CIC. Then indicate the numbers कि कितना number of companies are CIC. तो ऑडिटर को क्या रिपोर्टिंग करनी है? 4 points में करनी है with respect to NBFC. Under clause 16, क्या? First of all, whether the company is required to obtain registration under section 45 IA of RBI Act, and if so, whether the same has been obtained. Whether any activity has been conducted by the company without obtaining valid certificate of registration as required by RBI. ठीक है. And whether the company, if it is CIC, whether it continues to fulfill the criteria. And in case of a group of NBFC, it is having more than one CIC, then the auditor needs to indicate the numbers of such CIC. Clear? ठीक है. So is it clear? So Nilabjo, I gave you example of non-cash transaction ना कि shares issue हुए हैं. Directors have not paid cash. They might have given some, let's say their car, non-cash. Cash is not involved. ठीक है Nilabjo? See, Charu is saying, मैम ये सेक्शन नंबर लिखने जरूरी है. देखो, whatever is given in your module, I told you कि वो आप try to learn it. ठीक है. But अगर learn नहीं हो रहे हैं, and it is always better not to write instead of writing wrong sections, है ना? Try to learn. Simple है. अब मैंने NBFC का कैसे बोला है कि if the NBFC is required to register under 45 IA of RBI Act. अब इसको आप learn ही ऐसे करो ना, 45 IA of RBI Act. Whether the same has been obtained or not, है ना? So try to learn. If it is not possible, then गलत मत लिखना, relevant section लिख देना फिर. And CIC is core investment company. इसके अंदर mention है ना आपके module में भी. So core investment company. ठीक है? Is it clear? Yes. Any question can come from Caro, and very very important.
ठीक है. Now clause number 17, which is very easy. Whether the company has cash losses in the financial year or immediately preceding financial year, and if so, the auditor needs to state the amount. सिंपल है ना कि कैश लॉसेस हैं. कैश लॉसेस है मतलब दैट द एंटिटी इज नॉट जनरेटिंग पॉजिटिव कैश फ्लोज. कैश फ्लोज, द आउटफ्लोज आर मोर देन द इनफ्लोज, है ना. सो वेदर देयर आर कैश लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड इफ सो द ऑडिटर नीड्स टू स्टेट द अमाउंट. As simple as that. Clause number 17, resignation by statutory auditor. Remember section 140 कि ऑडिटर हैज अ राइट टू रिजाइन, है ना, पर उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज हैं. ठीक है. नाउ हियर व्हाट हैपेंस इज कि ऑडिटर चला गया जो पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर था. नाउ द इनकमिंग ऑडिटर आया है हु इज गिविंग द रिपोर्ट एंड हु इज गिविंग कैरो रिपोर्ट ऑल्सो. सो नाउ इन हिज कैरो रिपोर्ट, जो आफ्टर द रिजाइंड ऑडिटर जिसने वैकेंसी फिल की है ना, वो ही हैज टू मेंशन दैट वेदर एनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर has given resignation during the year, and if so, whether the auditor जो incoming था, he has taken into consideration the issues, objections, concerns of the outgoing auditor. देखो जब हमने section 140 किया ना, we saw that when the auditor is resigning, when he's resigning, so I can say he's outgoing auditor, so there are certain reporting responsibilities on the auditor. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स इन फाइनल व्हेन यू विल स्टडी कोड ऑफ एथिक्स ना, वहां पर आप देखोगे जो इनकमिंग ऑडिटर है ना, जिसको इन प्लेस ऑफ रिजाइनिंग ऑडिटर अपॉइंट किया है, ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द आउटगोइंग ऑडिटर कि भाई क्यों जा रहे हो, क्या हुआ, रिजाइन क्यों किया. ठीक है. सो हियर इट स्पेसिफिकली आस्क्स द ऑडिटर दैट ऑडिटर टेल द शेयर होल्डर्स दैट वेदर एनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज रिजाइन्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ यस, then you need to mention that auditor whether you have taken into consideration the issues, objection, concerns of the outgoing auditor. और ये कहाँ पर ड्यूटी है? रेजिग्नेशन की सेक्शन 140 पे किसकी ड्यूटी है? जो आउटगोइंग है, जो जा रहा है ना, उसको आरओसी के साथ फाइल करना है, कंपनी के साथ फाइल करना है. रिमेंबर, है ना, हमने सेक्शन 140 में किया था. कोड ऑफ एथिक्स में किसके ऊपर ड्यूटी है? इनकमिंग ऑडिटर के ऊपर, कि अगर कोई रिजाइन करके गया है तो पूछोगे ना क्यों जा रहे हो, सीए ही है ना वो, है ना, ऑडिट फर्म है ना, कोई तो रीजन होगा. रिजाइन किया है, कोई और कोई रीजन नहीं है, रेजिग्नेशन है. ठीक है. सो हियर ऑडिटर नीड्स टू मेंशन स्पेसिफिकली वेदर ही हैज टेकन इनटू कंसीडरेशन द इश्यूज, ऑब्जेक्शंस, कंसर्न्स ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर. क्लियर. नाउ विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज नंबर 19, तो अगर आप इसको रीड करोगे ना, और मैंने समरी में भी गोइंग कंसर्न लिखा है, so as such going concern word is not mentioned in this clause. ठीक है. but when you will read it ना, आपको समझ आ जाएगा why I have mentioned going concern. so it basically says that based on the financial ratios, based on the aging of trade creditors, trade debtors, everything, expected date of realization of financial assets, payment of financial liability information, ऑडिटर्स नॉलेज अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट प्लान, मतलब जितना भी काम अभी तक आपने किया है ना, बेस्ड ऑन ऑल दोस नॉलेज, वेदर ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एज ऑन द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट. ऑडिटर को ये स्पेसिफिकली मेंशन करना है. तो जो एसए 570 में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो तो है ही है, बट यहाँ पर भी ऑडिटर को बताना है कि बेस्ड ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग ना, जितना भी उन्होंने अभी तक काम किया है, वेदर ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, दैट इज द कंपनी विल बी एबल टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी. ठीक है. दैट इज देयर इज गोइंग कंसर्न. द गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. क्लियर है. So basically this point relates to what? Going concern. So if we just have a look at this point now, this is what 19th point. So I told you that as such going concern word is not written. So on the basis of financial ratios, aging, expected date of realization of financial assets, payment of financial liabilities, other information accompanying in financial statements, auditors knowledge of board of directors and management plans, मतलब जितना भी आपने काम किया है ना, based on that, whether auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of audit report, that company is capable of meeting its liability existing as at the balance sheet date and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date. कि एक साल में current assets will be able to meet the current liabilities, है ना, going concern है. एक आपका point होता है ना that current assets
If the current liability is more than current assets, this is one of the indicator of continuous which cast a doubt on the entity's ability to continue as a going concern. So this is basically about that point कि ऐसा तो नहीं है, so going concern है या नहीं. So specifically यहाँ पर क्या है, reporting requirement on the company. Clause number 20. So this is what with respect to your CSR activities, है ना. So CSR activities कहाँ है, section 135 में, ठीक है. So ये अब इसको कैसे डिवाइड किया गया है रिपोर्टिंग को, with respect to ongoing projects, with respect to other than ongoing projects, ठीक है. So let's say CSR में the company is building some hospital, ठीक है, and it is ongoing, ठीक है. So the company it has to spend 2% of the average net profit for the last 3 years. ऐसा ही होता है ना section 135 में, you all must have done it, है ना. So let's say 2 crores was the amount that the auditor that the company was to spend during the year, ठीक है. But out of that some amount, let's say 50 lakhs is unspent. अभी काम चल रहा है, maybe next year spend करना पड़ेगा. So it says whether the company has transferred such amount to special account. एक special dedicated account बना देंगे जहां पर ये जो CSR expenditure के लिए amount है ना, that will be transferred if it is unspent during the year. सिंपल है. आपको 2 crore स्पेंड करना था ड्यूरिंग द ईयर, 50 लाख इज अनस्पेंड क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में, बिकॉज खर्चा तो वैसे ही होगा ना जितना जितना आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, है ना. तो इट मे बी रिक्वायर्ड नेक्स्ट ईयर, तो उसको स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डेडिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर एक्टिविटी. सिंपल है. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अभी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, सो वट एवर इज द अनस्पेंड अमाउंट इट इज ट्रांसफर टू अ फंड एज मेंशन्ड इन शेड्यूल 7 within 6 months of the expiry of financial year. तो इसको कहां पर ट्रांसफर करते हैं, a fund which is mentioned in schedule 7 within 6 months of expiry of financial year. So basically CSR activities पर जो खर्चा है, अगर कुछ अनस्पेंट अमाउंट है, सो ऑनगोइंग में तो उसको अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपको अमाउंट चाहिएगा. विद रिस्पेक्ट टू द अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, उसको एक फंड में ट्रांसफर कर देंगे within 6 months of the expiry of financial year. ठीक है, is it clear? सिंपल है, is it clear? So quickly एक बार देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स किए हैं, and then the last clause and paragraph 4. ठीक है, तो we started with PPE and intangible assets, then inventory, है ना. फिर क्लॉज नंबर 3 था एनी लोन दैट हैज बीन मेड बाय द कंपनी टू एनी पार्टी, जिसमें लोन गारंटी सब कुछ आ गया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ठीक है. देन वी सॉ सेक्शन 185 एंड 186 लोन टू डायरेक्टर्स एंड लोन्स इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी, देन पब्लिक डिपॉजिट्स रिसीव्ड by the company, then where the cost records have been maintained. Statutory dues को हमने undisputed और disputed में डिवाइड किया. Transactions जो पहले डिस्क्लोज नहीं की थी, इनकम टैक्स के असेसमेंट में सरेंडर या डिस्क्लोज की है. रीपेमेंट ऑफ ड्यू, लोन टेकन बाय द कंपनी की बात कर रहे हैं हम इधर, ठीक है. अब ये पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है कि आईपीओ एफपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोफेशनल अलॉटमेंट है. 11 पॉइंट फ्रॉड रिपोर्टिंग से रिलेटेड है. 12 point is with respect to Nidhi company. 13 is related party transactions. 14th is with respect to internal audit system. 15th is with respect to what, non-cash transactions, section 192. 16 is with respect to NBFC. 17 is with respect to cash losses in the financial year and immediately preceding. 17 is with respect to resignation of statutory auditor. 19 is with respect to going concern. 20th is with respect to CSR, section 135. कोई डाउट है? क्विक रिवीजन करेंगे लास्ट में अगर टाइम होगा. सो हितेश ने लिख दिया क्लियर है, बैन रेड्डी ने लिख दिया क्लियर है, बाकी सब भी बताओ क्लियर है. देन वी विल प्रोसीड विद द लास्ट क्लॉज एंड देन पैराग्राफ नंबर 4. क्विकली बताओ क्लियर है, एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ लर्निंग पार्ट भी हो रहा है क्लास में. The lecturer is saying, ma'am, it is clear. So, with respect to the last clause, it says that
We have seen in paragraph number 2 that CARO is not applicable with respect to consolidated financial statement, है ना? But the companies which are included in the consolidated financial statement, उसके standalone पर तो CARO लगा होगा ना, है ना? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कैरो एप्लीकेबल नहीं है, बट द कंपनीज विच हैव बीन कंसोलिडेटेड टू मेक द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके स्टैंड अलोन्स पर तो कैरो लगा होगा ना, है ना? तो रिस्पेक्टिव कंपनीज के ऑडिटर्स ने इफ दे हैव गिवन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क ऑन इन द कैरो रिपोर्ट ऑफ स्टैंड अलोन, so the auditor of the holding, he needs to give the details of the company कि किस किस standalone company के कैरो रिपोर्ट में एडवर्स रिमार्क है and the paragraph numbers of कैरो रिपोर्ट. So I'll repeat it. So consolidated financial statements बने हैं हमारे and इसमें कौन कौन से सब्सिडरीज हमने ऐड किए, ABC, ठीक है? नाउ ये जो इंडिविजुअल इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि स्टैंड अलोन पर तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ना, कंसोलिडेटेड पर नहीं लगता, बट इनके स्टैंड अलोन पे तो कैरो लगा होगा ना, वहां पर तो इनके रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने कुछ क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क लिखे होंगे. तो सो द ऑडिटर हु इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ही नीड टू मेंशन इन हिज ऑडिट रिपोर्ट द डिटेल्स ऑफ सच कंपनी जहां पर कैरो लगा है एंड क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क है, along with the paragraph numbers of कैरो रिपोर्ट की वहां वहां पर क्या है, नेगेटिव रिमार्क है, ठीक है? सो इज इट क्लियर? सो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बार बार थोड़ी ना कैरो करते रहोगे, कैरो की रिपोर्टिंग पहले स्टैंड अलोन पे किया, अब कंसोलिडेटेड पे कर रहे हो, नहीं. बट कंसोलिडेटेड में मेंशन कर देना कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ऑल कंपनीज देयर आर एडवर्स रिमार्क एंड द रिस्पेक्टिव पैराग्राफ नंबर इन द कैरो रिपोर्ट ऑफ दो स्टैंड अलोन कंपनीज, ठीक है? सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द 21 क्लॉजेस. नाउ पैराग्राफ नंबर 4, ठीक है? सो ये 21 क्लॉजेस कहाँ कंटेन है, पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है? सो अगर कैरो को क्वेश्चन आता है एंड यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द क्लॉज नंबर, तो आप ये तो लिख सकते हो ना, रेलेवेंट क्लॉज ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ कैरो 2020. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल आस्क यू टू लर्न द क्लॉज नंबर्स. अगर नहीं पॉसिबल है देन आई एम गिविंग यू दिस ऑप्शन. तो पैराग्राफ 3 तो पता ही है ना कि 21 क्लॉजेस कहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है? भारद्वाज, आई ट्राई टू रिवाइज कैरो 2020. तो पहले कंप्लीट करते हैं. तो पैराग्राफ 4 में क्या बोलता है, रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल एडवर्स रिमार्क, ठीक है? ठीक है? सो इफ आंसर टू एनी क्वेश्चन इन पैराग्राफ नंबर 3, द 21 क्लॉजेस, बिकॉज देखो सब कैसे स्टार्ट हो रहे थे, वेदर, तो मतलब क्वेश्चन ही तो थे ना वो, ठीक है? इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, ठीक है? द ऑडिट रिपोर्ट टू स्टेट द बेसिस, ऑडिटर को बेसिस लिखना होगा कि किस बेसिस पे आपने नेगेटिव, अगर किसी के बारे में आप नेगेटिव बोल रहे हो तो आपके पास बेसिस होना चाहिए ना. एंड इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, ठीक है? लेट्स से ऑडिटर को इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए कुछ लिखना था, बट ऑडिटर अटेंड ही नहीं कर पाया है, मैनेजमेंट ने किया ही नहीं है फिजिकल वेरिफिकेशन या वट एवर इज द रीजन, देन इंडिकेट द फैक्ट एंड द रीजंस, है ना? ऑडिटर को कुछ लिस्ट ऑफ लोन्स चाहिए थी, है ना, मैनेजमेंट ने प्रोवाइड ही नहीं किया है, देन ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, देन इंडिकेट द फैक्ट एंड द रीजन. सिंपल है. तो पैराग्राफ नंबर 4 क्या बोलते हैं, इफ आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चन इन पैराग्राफ नंबर 3 इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, देन ऑडिट रिपोर्ट टू स्टेट द बेसिस, एंड इफ इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, देन इंडिकेट द फैक्ट एंड द रीजंस. एंड विद दिस we have covered CARO 2020 in entirety. तो ठीक है, I'll take a quick revision of the entire CARO 2020. बहुत अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा and I'm sure this revision is going to help you. But उससे पहले एक तो मेरे को query दिख गई है of Nilabjo, point number 13. ठीक है, I'll repeat that while revising. Quickly send in your replies. कुछ थोड़ा बहुत समझ आया, and it is going to be more clear to you once you, in fact, if you go through the module twice at least. लॉ है ना, अब आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है, बट एक दो बारी पढ़ोगे तो लर्निंग भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज, देन द नेक्स्ट 10 minutes एंड दैट्स इट. Nilabjo, I'll definitely repeat point number 13, and Bhardwaj, I am revising for better clarity, as you have mentioned. Sending your replies quickly.
See, I'm waiting for your replies. Can we proceed with the vision which is very much required for this so that we can collect all the 21 clauses? So I can see Ban Reddy saying clear. That's it. So कैरो 2020 में ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है in consultation with National Financial Reporting Authority and section 143 subsection 11 में थी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर कंसल्टेशन विद नाफरा मेड क्या बनाया है कैरो 2020. सो बेसिकली इट इज एन एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. ठीक है. 4 पैराग्राफ्स हैं. पैराग्राफ 1 किसके लिए है? एप्लीकेबिलिटी के लिए. पैराग्राफ 2 किसके लिए? ऑडिटर्स रिपोर्ट टू कंटेन मैटर्स स्पेसिफाइड इन 3 and 4. पैराग्राफ 3 क्या है? मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट. एंड पैराग्राफ 4 क्या है? रीजंस फॉर अनफेवरेबल क्वालिफाइड आंसर. एप्लीकेबिलिटी क्या है? एवरी कंपनी को इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी except banking company under the Banking Regulation Act 1948, insurance company under the Insurance Act 1938, Section 8 companies, one-person companies, small companies, private limited company not being a subsidiary or holding of public company, and where the paid-up share capital and reserve is not more does not exceed 1 crore as at the balance sheet date. Total borrowings from banks, financial institution does not exceed 1 crore at any point of time during the year. And total revenue as per Schedule 3 should not exceed what? 10 crores during the financial year. All these should be satisfied in order to get the exception. ठीक है. पैराग्राफ 2 says that 143 में जो रिपोर्टिंग है वो तो करनी ही है, बट इन एडिशन टू दैट पैराग्राफ 3 और 4 की भी रिपोर्टिंग करनी है. और यहाँ पर 1 April 2019 है. आई टोल्ड यू कि ये पैंडेमिक की वजह से 1 ईयर के लिए डेफर हो गया था. फाइनेंशियल ईयर 2021 से एप्लीकेबल हुआ एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर क्लॉज 21. अब क्लियर है कि क्या था वो? इरल, आपका डाउट हमेशा रह जाता है. चलो देखते हैं. ठीक है. सो पैराग्राफ नंबर 3, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट. देयर आर 21 क्लॉजेस. सो वी विल स्टार्ट we will revise all the clauses. PPE intangible assets में 5 points हैं कि proper records है नहीं quantity situation of PPE के लिए, and proper records है नहीं full particulars of intangible assets के लिए. Second, PPE physically verify whether management has verified PPE at reasonable intervals, and in case of material discrepancy, the same has been properly dealt with in the books of accounts. Third, fourth, fifth, you have all done in chapter number 9 के notes में. तो वहां पर management disclose कर रहा है, यहाँ पे auditor बता रहा है कि management ने ठीक से disclose किया. So whether the title deeds of the immovable property as disclosed in the financial statements other than held on lease, whether the title deeds are in the name of the company, and if not, then the company has the auditor needs to give a detail in a tabular form which is given in your module, whether the company has revalued the PPE intangible assets or both, and whether it has been done by registered valuer, and the auditor needs to specify the change if it is more than equal to 10% change in aggregate net carrying value of each class of PPE on intangible assets. So materiality concept पे reporting है. Whether there is any proceeding initiated or pending against the company for Benami property under the Benami, just a minute, Transaction Prohibition Act 1988, and whether the same has been disclosed by the company in the financial statement. Here, inventory में 2 points पे है. Whether the physical verification of the inventory has been done by management at reasonable intervals, whether the management's coverage and procedure is appropriate or not, and in case of any discrepancy of more than equal to 10% of aggregate of each class of inventory, if yes, whether the same has been dealt with properly in the books of accounts. During any point of time of the year, if the company has been sanctioned a working capital limit exceeding 5 crores from the banks or financial institutions, okay, in aggregate, and on security of current assets, quarterly returns पे there was a doubt. So in case of such working capital limit, the company is required to file with the bank जिससे भी आपने वर्किंग कैपिटल लिमिट लिया है, क्वार्टरली रिटर्न्स कि कितना, अगर आपने इन्वेंट्री के अगेंस्ट लिया तो कितना इन्वेंट्री है, क्वार्टरली बेसिस पे आप उसको बैंक के साथ फाइल करोगे, है ना, जहां पे आपका मेंशन होगा कि कितना इन्वेंट्री है आफ्टर द फिजिकल verification of inventory. That need to be filed with the bank, financial institution. Auditor will see whether that is in agreement with books of accounts. If not, give the details. Third clause, with respect to any loan,
investment guarantee security secured unsecured to company firm LLP any other party if yes 6 points पे reporting है क्या है कि अगर joint venture subsidiary associate को किया है what is the aggregate amount during the year and balance as on balance sheet date others को किया है तो same reporting terms and condition not prejudicial to the company है schedule of repayment and principal stipulated है and जो भी receipts repayments है regular है कोई amount overdue है for more than 90 days तो reasonable steps लिए हैं नहीं if any of such loan repayment is fallen due during the year but company ने क्या किया renew extend या fresh loan दे दिया है या grant to settle the existing loan to the same party तो कितना aggregate amount of such renewed extended fresh loan और उसका कितना percentage है to the total loans and advances given by the company अगर कोई भी loan advance in the nature of loan है जो repayable on demand है जिसका specify नहीं किया what is the period what are the terms सो एग्रीगेट अमाउंट क्या है परसेंटेज टोटल लोन क्या है उसमें से कितना प्रमोटर्स और रिलेटेड पार्टी को दिया क्लॉज नंबर 4 स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 185 एंड सेक्शन 186 185 किसके लिए होता है 195 इज विद रिस्पेक्ट टू लोन गिवन टू डायरेक्टर्स एंड 186 इज लोन्स इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी सो यू जस्ट नीड टू लर्न दैट वेदर द provisions contained in section 185 and 186 have been complied with if not the auditor needs to mention the details clause 5 public deposits तो RBI directives section 73 to 76 प्रोविजंस एंड रूल्स कंप्लाई किया है नहीं नेचर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन अगर कोई ऑर्डर है CLB का NCLT का RBI का कोर्ट का ट्रिब्यूनल का वेदर कंप्लाइड और नॉट ठीक है कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं तो CG ने बताया है अगर 148(1) में तो वेदर दीज हैव बीन मेंटेन्ड और नॉट सिंपल स्टैट्यूटरी ड्यूज है उसको डिवाइड किया गया है अनडिस्प्यूटेड सो स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होते हैं ड्यूज अमाउंट पेबल अंडर एनी स्टैट्यूट लॉ है ना तो डिस्प्यूटेड है तो अमाउंट इन्वॉल्व और फोरम जिसके आगे बिफोर पेंडिंग है अनडिस्प्यूटेड है तो वेदर कंपनी रेगुलर है नहीं बिकॉज होनी चाहिए ना रेगुलर बट इफ नॉट देन व्हाट इज द अमाउंट विच इज पेंडिंग एज ऑन द बैलेंस शीट डेट फॉर मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल ठीक है ट्रांजैक्शंस जो नहीं किए थे रिकॉर्ड आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बट अब उसको डिस्क्लोज किया अंडर इनकम टैक्स एक्ट इफ सो वेदर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट क्लॉज नंबर 9 ये क्या है रीपेमेंट देखो थर्ड क्लॉज में भी 6 पॉइंट्स थे यहाँ पर भी 6 पॉइंट्स अब यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ इंटरेस्ट में अगर किया है पीरियड और अमाउंट क्या है और 6 उसमें फॉर्मेट में देना है वेदर कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर बाय बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर कोई भी टर्म लोन है वो पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं एंड इफ नॉट देन व्हाट इज द अमाउंट एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं यूज किया इफ यस द नेचर एंड अमाउंट 2 पॉइंट्स किससे रिलेटेड है 5th और 6th सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट वेदर कंपनी हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम एनी पर्सन एंटिटी टू मीट ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट अगर ऐसा है तो क्या डिटेल्स है नेचर एंड अमाउंट अगर कंपनी ने लोन जो रेज किया ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इन्हीं 3 कंपनीज में इफ सो व्हाट आर द डिटेल्स एंड अगर कोई डिफॉल्ट इन रीपेमेंट है तो वो बताओ IPO FPO किया है तो पर्पस एंड नहीं है तो डिटेल्स एंड डिलेज सेम वे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया सेक्शन 6242 फॉलो किया नहीं पर्पस नहीं है तो डिटेल्स एंड नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस 11th में बी में क्या बोलता है 143 सबसेक्शन 12 में कोई रिपोर्टिंग थी ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट को वो किया या नहीं ए में क्या बोलता है कोई भी फ्रॉड हो जो बाय द कंपनी ऑन द कंपनी है जो नोटिस या रिपोर्टेड हुआ है उसका नेचर एंड अमाउंट शेयर होल्डर्स को भी तो पता होगे ना एंड अगर कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स रिसीव बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर है तो ऑडिटर ने कैसे कंसीडर किया इसको निधि कंपनी सेक्शन 406 में होती है कंपनी चिट फंड कंपनीज की तरह आई टोल्ड यू व्हाट इज द पर्पस सो वेदर दे हैव कंप्लाइड विद द नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स एज पर रूल्स हैं दैट इज 10% होने चाहिए एटलीस्ट डिफॉल्ट तो नहीं है रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट इफ यस व्हाट आर द डिटेल्स 13th point someone was saying ना तो it is very easy कि related party transactions जो हैं है ना सो जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कोई हुई रिलेटेड पार्टी कहाँ आपके क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 76 में डिफाइंड है ना सो वेदर कंप्लायंस विद सेक्शन 177 188 हुआ है नहीं एंड डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ है नहीं इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो है कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर है नहीं और जो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट्स हैं वो कंसीडर किए हैं नहीं स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स सेक्शन 192 कंप्लाई किया है या नहीं एनबीएफसी सो दिस इज कंपनी स्पेसिफिक एनबीएफसी है तो ही लगेगा तो पहले तो रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई लिया है या नहीं कोई एक्टिविटी विदाउट ऑब्टेनिंग द वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐसा तो नहीं है कुछ कर दिया एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ
NBFC जो शेयर इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, सो वेदर दैट दे हैव फुलफिल्ड दैट क्राइटेरिया, और अगर ग्रुप ऑफ NBFC है देन उसमें मोर देन वन CIC है, द ऑडिटर हैज टू इंडिकेट द नंबर्स। 17th इज वेरी सिंपल, कैश लॉसेस तो नहीं है फाइनेंशियल ईयर में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, इफ यस स्टेट द अमाउंट। He will mention it. Where is it mentioned? Resignation of statutory auditor अगर है during the year. So whether auditor has taken into consideration the issues, objections, concerns of outgoing auditor. ठीक है। 19 कहता है कि जितना भी अंडरस्टैंडिंग लिया फाइनेंशियल रेशियो से, एजिंग से, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन से, पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज या ऑडिटर्स की जो भी अंडरस्टैंडिंग है, BOD और मैनेजमेंट प्लान्स, वेदर ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन की मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, दैट इज द कंपनी विल बी एबल टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी। ठीक है। क्लॉज नंबर 20 विद रिस्पेक्ट टू CSR, इसको डिवाइड किया है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हम क्या कहते हैं, अगर कोई अनस्पेंड अमाउंट है तो उसको ट्रांसफर कर दो स्पेशल अकाउंट में, कि उसको डेडिकेट कर दिया, वहीं पे आपने ब्लॉक कर दिया कि अब आप इसी पर्पस के लिए यूज करोगे। ब्लॉक से आई मीन कि आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस अकाउंट में मेट्रिक रख दिया है। अदर देन ऑनगोइंग है तो अभी यू आर नॉट स्पेंडिंग इन ना, ऑनगोइंग नहीं है, आपको खर्चा करना ही नहीं है, बट वो आपको अलग से साइट तो करना है ना, तो इट विल बी ट्रांसफर टू अ फंड मेंशन इन शेड्यूल 7 विद इन 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लास्ट क्लॉज सेज दैट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो स्टैंड अलोन कंपनीज है उनका तो कैरो, उन पर तो एडिशनल रिक्वायरमेंट है कैरो की, सो उसका जो क्वालिफिकेशन एड्रेस रिमार्क है बाय रिस्पेक्टिव ऑडिटर, सो जो ऑडिटर ऑफ आर कंपनी है जिसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, वहां पर उनका पैराग्राफ नंबर्स ऑफ कैरो रिपोर्ट लिखना है। पैराग्राफ नंबर 4 सेज रीजंस इफ एनी ऑफ द आंसर टू क्वेश्चन इन पैराग्राफ 3 इज अनफेवरेबल क्वालिफाइड, तो रीजंस देना है, बेसिस बताने हैं, और अगर आप नहीं बता पा रहे हो, ओपिनियन नहीं दे पा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट, तो इंडिकेट द फैक्ट एंड द रीजंस। ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्विकली टेक 1 or 2 डाउट्स। Yes, Nilabju, you are correct with respect to point number 18. So, Hiral is saying page number. Just a minute. मतलब डिस्पेंस मतलब खत्म कर दिया कंपनी ने, हिरन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टेक इट एज योर होमवर्क, बट डिस्पेंस का मतलब क्या है कि द कंपनी इज नॉट डूइंग दिस इन्वेंटरी वेरिफिकेशन नाउ एनीमोर। ठीक है हिरन। सो हिरल विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 139 पक्का नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। एंड नीलाब्जू whether your doubt is clear, and Hiral with respect to ये वाला example I have told you, we dispensed with मतलब अब ये exercise नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या mentioned है वो आप homework में देखो। ठीक है। So students tell me, कैरो 2020 समझ आया है? कोई डाउट है तो प्लीज सेंड मी, अभी भी we can give next 2-3 minutes to your doubts, and in the next session we will be completing essay 299 joint audit, essay 600 relating to branch audit, section 148 relating to cost audit and penalty provisions. ठीक है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये आपको कैरो 2020 का जो सेशन हुआ है क्रिस्प है, जहां पर यू कैन जस्ट आफ्टर viewing this lecture आपको पूरा कैरो 2020 समझ आ जाएगा। वी हैव रिवाइज्ड आल्सो, बट यस योर रीडिंग द मॉड्यूल in entirety in between the lines is very much required. और जहां पर भी examples illustrations given है मॉड्यूल में, don't take them lightly. उसी बेसिस पे, on that basis only you will get the MCQs, true false or the case scenarios or maybe the descriptive question. ठीक है, किसी भी क्लॉज पे क्वेश्चन आ सकता है, any kind of question can come. ठीक है, so thank you for being a patient listener and thank you so much for wishing me Teachers Day. Thank you to all the students there and see you in the next session which is the last session for this chapter. ठीक है, so next session में आने से पहले bring all your doubts and Hiral you तो definitely bring all your doubts. ठीक है, and I would upload all the questions before coming for the next session. So we will try, if the time will permit, that we will go through all those questions. Otherwise, you at home practice those questions. In case of any doubt, depending on the time, we will discuss your doubts. ठीक है, so please send in your replies. समझ आया है, कोई doubt है, whether you have actually enjoyed today's session or not. ठीक है, thank you for being a patient listener and good night. Thank you.